Folks, we're going to start in about 10 minutes. I can see one of our panelists is joining. Yep. Can you hear me, Mama? Yes, I can hear you. Okay. I promoted you to as a panelist, just in case. Oh, really? That's not good. Yeah, welcome everyone. We're going to start in a few minutes. We are waiting for our panelists to join. We are very excited. We have very distinguished panelists. Uh, Many of them actually dedicated their life for the human rights struggle in Pakistan, especially focusing on Sindh also. We have Dr. Mehdi Hassan, Sai I.A. Rahman, Saint Taj Joyo, Adi Surat Lohar, Saint Dilshad Bhutto, and our own Saint Lakhu Lohana. We're going to discuss the international. We are doing this webinar to celebrate the International Human Rights Day, and we'll focus on human rights violation in Sindh. Actually, I forgot. We also expecting Adi Farhan Pahani also. So I can see, and Saint Basir Naveed, obviously. Saint Basir Naveed, I can see in. He's trying to join his audio. The Surat Lohar also trying to join also. आवाज आ रही मेरी? Saint Basir, GSN, welcome. Sir, GSN, welcome. Thank you very much. I will come back to you just a minute. Let me close my. Where is that? Yeah. Saint Lakhu, welcome. Dr. Mehdi, welcome, sir. Do you hear me? Yes, thank you very much. Thank you. Really appreciate it. साईं डॉक्टर मेहदी साहब बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी साईं बड़ी मेहरबानी नसीर साहब साईं बाबा सोरठ बड़ी बड़ी मेहरबानी She is trying to join audio, I believe. Her audio is not connected. You are fine, Saint Basir. You are fine. डॉक्टर मेहदी हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ी Thank you. Shukriya. We still have 5 minutes before I will start commenting. Right. That's fine. Yeah. Stop my. The Surat, welcome. जी जी थैंक यू अदा
बाबा सोरठ जी जी ठीक है बाबा बली करे आई हैं बाबा बली करे आई ठीक हैं है बाबा हा सूरत भली करी आई इहो नंढो न छो थो अचे मां हिन खे वधायां It's not a नहीं पहले ठीक ये ठीक खत्म हो तो मुझे बता दें क्योंकि वो चलता रहता है। so minute. जी डॉक्टर साहब आप तो आ गए नजर आ रहा है सूरत जी जी कैसे केड़ो हैं? हाल आहे वालेकुम ठीक सलाम है देखो पहली दफा मैं देख रहा हूँ आपको कैसे पहली हैं? दफा मुलाकात हो रही हम मैं तो ठीक रोज हूँ ही बेटा देखते आप हैं खैरियत से इनके फोटोग्राफ्स में हाँ जी बिल्कुल वेलकम वेलकम एवरीवन everyone so let me have one more minute sir we are still waiting for Farhana Ziswani and Saeed Dilshad Bhutto and Saeed Ayer. I can see Saeed Ayer Mancha. ताई आइए रहमान बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी वेलकम सर Thank you, welcome. बैकग्राउंड सही है अस्सलाम वालेकुम सर रहमान साहब कैसे हैं बशीर साहब? कैसे मिजाज है सर आपकी तबीयत खैरियत से हैं? जी थैंक यू सर बिल्कुल खैरियत से आप कैसे मिजाज हैं सर बस चल रहा है, अब गुजर रहा है। आपके आर्टिकल्स पढ़ के जिंदा हैं सर हम लोग तो हम लोग क्या जोरदार होते सर बहुत ही हाँ बशीर साहब खैरियत से हैं? जी सर रहमान साहब बिल्कुल खैरियत से हूँ आप ठीक ठाक मैं कह रहा था कि बस आपके आर्टिकल ही एक बहुत बड़ी वो होती है हम लोगों के लिए जिंदगी का सबब वो है ना दैट्स रियली इंस्पायरेशन वो Yes. शेख का एक शेर है कि अञा रुञ मां रड़ अचे थी मता ईअं समझी मुआ मोर सारा means it's just the peacocks they cry from the desert and don't think all the peacocks are dead so people are, honestly you all three we are sitting here but Sai Mehdi Hassan Sai Ayer Rahman Adi Sorat you are great inspiration for us honestly अञा रुञ मां रड़ अचे थी मता ईअं समझी मुआ मोर हाँ। so that you people inspire us honestly you are the people who keep us You going are really yeah that's the truth हम And लोगों let me को add, जिंदा रखा है वैसे तो हम कहते हैं कि तुम जियो हजारों साल लेकिन जो भी सारे पैनलिस्ट हैं इनको देख के वाकई दिल चाहता है कि आप जिए हजारों साल थैंक यू आपकी तरफ ना मेरा 100 की आंटी जी जी आपकी तरफ मेरा 100 की उधर उधर निकले हो मुझे पता नहीं लड़का में काट बैठ में डाल तेरे कहीं पैसे कहाँ से आते हैं क्या उनको आजकल जगह को समझ गया है खर्चा कम कर रही है We are still waiting for 3 more panelists like Dilshad Bhutto, Farhana Ziswani, and Saeed Joy. Probably we're going to start in I think just to make sure that we are not missing anybody's time. So I think we can start, and I'm going to request my friends that if you contact these 3
panelists who are not yet. Let me actually double check if they have not shown up yet. मेरा ख्याल है डॉक्टर भुट्टो तो थे अभी. नहीं, हिदायत भुट्टो नहीं, बस नहीं, दिलशाद भुट्टो. I can see the Farhana Usmani. So I will let her join her audio. Then I think I'm going to start. ताज जोयो साहब भी नहीं है. हाँ, वो मैं कहता हूँ सर, दोस्तों के उनको कांटेक्ट करें. दिलशाद भुट्टो और ताज जो है. जी जी बिल्कुल. Okay. Welcome, Adi Farhanas. Welcome. हाँ फरनाज आ गई. You hear me? No. Okay. Thank you. Welcome. I'm going to start now. I think we still two panelists are there, but I'm going to request my WC team to contact them and help them join. Okay. So let me start. Thank you very much for all the panelists and people who joined us on Zoom webinar and Facebook. I really appreciate. It is my distinct honor and privilege to moderate today's webinar to mark International Human Rights Day. Our panelists had dedicated their life to defend the human rights in Pakistan, especially oppressed nation of Pakistan. आवाज कुछ कम आ रही है. इतनी है बस के अंदर. क्या म्यूट कर दें हम लोग? हाँ सही. फरहान साहब म्यूट करें क्या हम लोग? इतनी आवाज है. बेटा फोन उसके साथ कनेक्ट कर दो ना. हेडफोन के साथ. Okay. So on behalf of World Sindhi Congress, I welcome everyone who is here. My name is Farhan Kazi. I am Information Secretary of World Sindhi Congress. So we are here to celebrate the International Human Rights Day with focus on Sindh. World Sindhi Congress for last 3 decades, we raise our voice on international forum and United Nations for the gross human rights violation, including illegal occupation of Sindh's land, enforced disappearances, forced conversion of Sindhi Hindu girls, and destroying distinctive Sindhi secular culture, and ultimately state is complicit to turn Sindhis into minority. We have various speakers here. They have dedicated their life, like I said, for the defending human rights. And I'm going to start with Saeem Basir Naveed to speak. Saeem Basir Naveed is Executive Director of Hong Kong-based International Human Rights Council. He moved to Hong Kong when he got a job offer in Asian Human Rights Commission. He is veteran of human rights defender in Karachi. He helped settled 300,000 displaced affectees because of Liari Expressway. His whole family is being threatened and beaten on the street to convey a message to ministry to stop agitating on civic rights. He was a professional journalist and extensive experience in electronic and print media. He is associated with root movements in Pakistan like trade unions, civic issues, water issues, child labor, human rights issue, religious minority, women rights, and against the displacement of the people. For all of us as a Sindhi political worker, for us, he is the symbol of unity and united struggle, and we really appreciate that he is part of us. So Saeem Basir Naveed, please go ahead. सही बसीर आप अनम्यूट करें आपको. शुक्रिया फरहान साहब और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का भी शुक्रिया. अच्छा मेरी आवाज तो सही आ रही है ना? वॉल्यूम तो सही है ना? जी जी. ये जो हम इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाते हैं
اب اس کو سیلیبریٹ تو کیا کرنا، پاکستان میں تو ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اور خاص طور سے سندھ کے پس منظر میں یا چھوٹے صوبوں کے پس منظر میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی کہ جسے ہم سیلیبریٹ کریں. ہاں ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں اس دن کو ہر سال، اور اس کے حساب سے ہم اس بات کا بھی دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ بھائی انسانی زندگیوں کو تحفظ ملا ہے یا نہیں، انصاف کا حصول کس حد تک ہوا ہے، قانون و آئین کی بالادستی ہوئی ہے یا نہیں، یا قانون کی حکمرانی کتنی رہی ہے. یہ چیزیں تو بہرحال ہمیں بالکل ہی نہیں ملتی، بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر گزرا ہوا سال کسی معنوں میں بہتر نظر آتا ہے کہ جو اب ہمارے سامنے ہے یہ سال یا آئندہ آنے والے دن ہیں. اس طریقے سے اگر پورے ہم پس منظر میں دیکھیں انسانی حقوق کے، تو پاکستان کے بھی تمام حصوں میں یہی صورتحال ہے کہ کہیں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور نہ ہی انصاف کا حصول ہے. اور اس پورے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے جہاں ہم اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ تمام صورتحال کا جو بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، ورس ٹو ورس، تو اس میں سب سے برا کردار ہمیں عدلیہ کا ہی نظر آتا ہے کہ ان تمام انسانی حقوق کی پامالیوں کا جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ ہمارا عدلیہ ہے. اور ان کی طرف سے بھی ایسی کوئی ریفارمز وغیرہ نہیں کی جاتی کہ جس میں جو ہے لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت مسرتیں ملے یا خوشی ملے یا سہولتیں ملی، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. سندھ کے خاص پس منظر میں اگر ہم دیکھیں جس طرح کے آج کا عنوان ہے، تو ہمیں سندھ میں یعنی شروع دن سے جب سے پاکستان بنا ہے تواتر کے ساتھ یہ نظر آتا رہا ہے کہ ایک بہت ہی ڈسکریمنیٹو ایٹیٹیوڈ رہا ہے فیڈریشن کا سندھ کی طرف اور سندھیوں کی طرف. اور سندھ کے حساب سے جو انسانی حقوق کے اور بے شمار پامالیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سب سے بڑا جو محسوس ہوتا ہے ذکر وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ کہ آپ ویبینار کو چیک کیجیے کسی کا، تو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ قومی شناخت جو ہے وہ سندھ اور سندھیوں کے لیے سب سے بڑا سبب رہا ہے ان کی طرف نفرتوں کا. تو اس میں تو یہ ایک صاحب کوئی کر رہے ہیں مسلسل، یہ کوئی جرنلسٹ ہے. اچھا، تو یہ قومی شناخت جو ہے وہ سندھیوں کا سب سے بڑا یعنی انسانی حقوق کی پامالیوں کا رہا ہے کہ جس میں نفرتیں بہت کی گئی ہیں، رہی ہیں سندھ سے اور سندھیوں سے. اور اس میں جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے اپنی جو شناخت ہے زبان کی بھی، ان کے قوم کی بھی، وہ ساری ایک طریقے سے پامال کی گئی ہے. اور اس میں جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مختلف آبادیوں کا دباؤ جو ہے سندھ میں ڈال کر سندھ کی ثقافت، سندھ کی تاریخ اور سندھ کی جو ایک شناخت ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انفلکس جو ہے یہ اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور شروع دن سے ہی رہا جب سندھ سے کراچی کو الگ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے کہ یہاں کی شناخت کو ختم کیا جائے. اب یہی ڈیموگرافک سچویشن ہے جس میں سندھ کی آبادی جو ہے یعنی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور یا اس کا ریشو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طریقے سے سندھ کے تمام وسائل پر بھی جو معاشی وسائل ہیں اس کے اوپر بہت زبردست قسم کا دباؤ جو ہے وہ سندھ کے اوپر پڑ رہا ہے، اور اس سے اس کی ایک طریقے سے یہ ریڈ انڈینز بنائے جا رہے ہیں، ان کی زبان ان سے چھینی جا رہی ہے. گو کہ آج کل سندھ کا قومی وہ کوئی جشن منایا جاتا ہے سندھ کی ثقافت کا 6 ستمبر کو،
لیکن وہ ظاہری بات ہے کسی خاص حالات کے تحت ہے. لیکن مجموعی طور سے دیکھا جائے تو سندھ کی تاریخ، ثقافت اور ان کے رہن سہن کو یا ان کی زبان کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا. دوسرے جو ایک اور سلسلہ ہمیں سندھ میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک طویل عرصے سے فوج کا اور رینجرز کا قبضہ ہے، جس کے باعث یہاں پہ کبھی بھی کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ قانون کی کوئی حکمرانی ہے. یعنی یہاں اگر اسمبلیاں بھی ہیں اور یہاں لوگ الیکٹ بھی ہوتے ہیں، یہاں گورنمنٹ بھی بنتی ہے، لیکن یہ سب بے معنی سی ہو جاتی ہے جب یہاں پہ آپ فوج اور رینجر، ظاہری بات ہے رینجر فوج کا حصہ ہے، ان کا پورا قبضہ ہوتا ہے. انہوں نے تو زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، بے شمار گوٹ اجاڑ دیے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ بھی ہے اور تمام وسائل پر بھی ہے اور بہت اچھی اچھی عمارتوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. تعلیم وغیرہ سے کوئی ان کا سروکار نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اپنی بالادستی کرتے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت تو یہ ابھی حالیہ دنوں میں ہی پیش آیا جب ایک آئی جی کو اغوا کر لیا گیا. تو یہ اس طریقے سے جو پھر اس کے ساتھ مطلب یہ اسی سے تعلق رکھتے کہ امپیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سندھ کے اندر، اور جو علاقوں میں بھی ہے یا پورے پاکستان میں بھی ہے. لیکن سندھ میں دیکھا جاتا ہے کہ امپیونٹی جو ہے، جو بھی مجرم ہیں یا جو بھی بالادست طبقات ہیں ان کو بہت زیادہ امپیونٹی، اور اس امپیونٹی میں سب سے زیادہ جو رول ادا کرتے ہیں وہ ہماری عدلیہ اور یہ فوجی ادارے ہیں جنہوں نے کیا ہوا ہے. اور لوگوں نے بھی بولنا ہے تو میں اس کو تھوڑا جلدی کر لوں. تو اس میں ڈسپلیسمنٹ جو ہے یہ بہت ہو گیا ہے، اور ابھی حالیہ دنوں میں بھی دیکھے ہوں گے لوگوں نے کہ جب وہ ان کے فوج نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ ڈیفنس اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں. یہ ڈیفنس اتھارٹی ایسی ہے کہ جو کسی قانون آئین کے تحت نہیں ہوتی، ان کی اپنی آئین ہے. تو اسی کے تحت ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بہت سارے ہمارے گوٹھوں کو، ابھی یہ خاص طور سے کراچی کے گوٹھوں کا بھی مسئلہ آیا ہے، جس میں 350 گوٹھوں پہ انہوں نے قبضے کیے. ملک ریاض ان کے فرنٹ مین ہے یا بحریہ ٹاؤن ہے اور دوسرے لوگ ہیں. تو یہاں پہ لوگوں کی اپنی زمینوں کا بھی مسئلہ اور اپنے قدیمی گوٹھوں کا اور رہائش کا مسئلہ ہے، جو یہ جس طرح میں نے کہا کہ سندھ کی اپنی ثقافت کو اور تاریخ کو اور تمدن کو تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے. تو دوسرا مسئلہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا ہے، کہ بہت سارے خاندان کے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو 2 3 دفعہ بھی ہوئے ہیں. خود یہاں صورت لوہار بیٹھی ہوئی ہیں جو زیادہ بہتر بتائیں گی. ان کے والد صاحب چلے گئے تھے، خاصے عرصے رہے اور کئی سال رکھتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں. یہاں کی حکومت جو ہے وہ تو کوئی اسلام آباد سے لاپتہ ہو یا کہیں سے بھی ہو، اس پہ تو بات کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے بہت اچھا کرتے ہیں اس پہ ڈس اپیئرنس پہ بات کرنے کے لیے. لیکن اپنے صوبے میں وہ کسی طور سے اس کو نہیں روکتے، نہ اس کی کہیں سے مذمت کرتے ہیں. جبکہ نوجوان جو ہیں، مرد و خواتین پورے سندھ میں ہر زبان بولنے والے، وہ ڈس اپیئرنسز کے خلاف ایک تحریک چلاتے ہیں، بہت شد و مت سے چلاتے ہیں، بہت زور شور سے چلاتے ہیں تحریک. لیکن یہ حکومت پہ یا جو پارٹی یہاں پہ ہے سندھ میں، اس کو ذرا بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو روکیں یا پوچھیں یا اپنی پولیس کو ہی کہیں کہ اس کی رپورٹ دے دو. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اس سے ظاہری بات ہے ڈائریکٹ وابستہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پولیس انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں، جس طرح اس سال کراچی میں 300 سے زیادہ لوگ انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے، دہشت گرد، ڈاکو اور اس طریقے سے کہہ کے. لیکن جو ان کسٹڈی یا ڈیٹینشن ہوئے وہ ایک لمبی تعداد ہے. خاص طور سے یہ ان میں فوجی جو ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے جو ڈس اپیئر ہوئے ان کی اکثر لاشیں ملتی ہیں، جس طرح کے بلوچستان کا سلسلہ تھا یا فاٹا وغیرہ کے علاقے کا تھا. بالکل یہاں پہ
بہت یعنی ایک اچھی خاصی تعداد، اور جو ہم لوگوں نے جمع کی تھی ایک صورتحال اگست تک کے، وہ یہ تھی کہ 300 لوگ ایسے ہیں جو ڈس اپیئر ہوئے تھے اس 6-8 مہینوں میں، ان کا تھا، اور اس میں سے شاید 100 کے قریب ایسے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ مارے گئے. تو یہ ایک انفورس ڈس اپیئرنسز کو انہوں نے بنا لیا ہے. اور جو اندرون سندھ انفورس ڈس اپیئرنسز ہوتی ہیں ان کے کوئی اعداد و شمار نہیں مل پاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو گھر والوں کو جو تھریٹس ہو جاتے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ تمام لوگ جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ٹارچر جو ہے وہ بہت ہی اینڈیمک ہے سندھ کے اندر. یعنی ہر فرد چاہے مرد ہو خاتون ہو جو بھی گرفتار ہو اسے ٹارچر سے تھانوں میں گزرنا پڑتا ہے. یعنی چاہے وہ ذہنی ہو یا چاہے جسمانی ہو، ہر صورت میں اس سے گزرنا پڑتا ہے. اور ٹارچر ایک میتھڈ ہے جو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس میں یہ لیا جاتا ہے کہ صاحب یا تو اقبال جرم کے لیے ہوتا ہے یا رشوت کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے دو تو چھوٹیں گے یا کم سے کم اس کے اوپر مقدمہ بنے گا. تو ٹارچر بہت ہی مطلب زیادہ ہو گیا، اور خاص طور سے جو ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اس میں گرفتاریوں میں، تو اس کے علاوہ جو طاقتور عناصر ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں سندھ کے، چاہے وہ کراچی کے ہوں چاہے اندرون سندھ کے ہوں، وہ تمام لوگ بہت زیادہ ٹارچر کے واقعات میں ملوث ہیں. اور ان کو آزادی ہے، ان کو امپیونٹی ہے، کوئی ان کو پکڑتا بھی نہیں ہے. یہ سلسلے ہیں، اس طرح چلتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غلامی کی ورسٹ فارم جو ہے سلیوری کی، وہ ہمارے صوبے کے اندر بہت زیادہ ہے، جسے ہم بانڈڈ لیبر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کیونکہ زیادہ جب بانڈڈ لیبر کی بات ہوتی ہے تو یہی نظر آتا ہے کہ اندرون سندھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کراچی میں بھی ہے کہ جس میں اب پرائیویٹ کانٹریکٹر جو ہے وہ مزدوروں کو لے کر آتے ہیں کہیں باہر دوسرے شہروں سے، علاقوں سے، اور وہ ظاہری بات ہے ان کے لوگ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جس طرح بانڈڈ لیبر زراعت کے شعبے میں ہوتا ہے. اس میں خاص طور سے سب سے زیادہ جو ملوث رہتے ہیں، اس پہ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بہت بڑا کام ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ علاقے آزاد بھی کرائے گئے بانڈڈ لیبر سے. لیکن یہ چل رہا ہے، اور اس کو جو سلیوری والے آرٹیکلز وغیرہ میں جو کمنٹری کی گئی ہے، اس کو سلیوری کا ہی درجہ دیا گیا ہے کہ یہ بانڈڈ لیبر جو ہے یہ بھی سلیوری کا ایک بڑا فارم ہے کہ اس طریقے سے. تو یہ سلیوری ایک عام سلسلے سے جاری ہے اس ملک میں، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سب کوئی معلوم ہے کہ یہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے بعض مخصوص علاقوں میں سندھ کے کہ آنر کلنگ جو ہے یہ بہت زیادہ، اور اس کے اوپر کتنا قانون بن گیا، اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ قتل کا بھی جرم ٹھہرایا جائے گا. لیکن ایسا واقعات نہیں ہوتے کہ جو کاروکاری کے ملزمان ہیں ان کو قتل کے مقدمات قائم ہیں. وہ کوئی طریقہ جیسے دیت ہے یا اور طریقوں سے یہ تمام معاملات طے کر لیے جاتے ہیں، اور یہ دیت ہی ہے جو سب سے بڑی امپیونٹی کا سبب ہے اس صوبے میں بھی اور ملک میں بھی. ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے فورس کنورژن ٹو اسلام یہ بہت زیادہ ہے. ہم لوگ سے فورس کنورژن کہہ دیتے ہیں، میرا تو خیال ہے ہمیں فورس کنورژن ٹو اسلام کہنا چاہیے. اگر ہم صرف فورس کنورژن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب عیسائی اور ہندو کی زبردستی ہماری لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ کھلے طور سے میرا اپنا خیال ہے کہنا چاہیے فورس کنورژن ٹو اسلام یہ کہنا چاہیے. وہ مدد سے جس طریقے سے یہاں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں وہ کھلے عام لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ توہین رسالت کا وہ جو کیا ہے وہ راشد سومرو ہیں کہ کچھ ایسے ہی نام ہے ان کا، سومرو صاحب ہیں جے یو آئی کے. جمعیت اور علماء اب اسلام. جی اور اب تو وہ زیادہ پی ڈی ایم کے ایسے زیادہ شیر ہو گئے، وہ کھلے عام لوگوں کو اور چھوٹے موٹے اساتذہ کو ان کو بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں دھمکیاں دینے سے. اور بیچارے وہ وہیں اپنے معافی تلافی کر کے بیٹھ جاتے ہیں جن کی اطلاعات ہم تک نہیں آتی.
बल्कि अब तो ये हो गया है कि शहरों में इम्तिहानी कॉपियाँ भी चेक की जाती हैं और फिर उनको ओपन कर दिया जाता है कि इस बच्चे ने जो लिखा है आज़ादी से उसको वो कर देते हैं। अभी भी एक बच्चा जेल में पड़ा हुआ है इस चक्कर में। तो ये सारे सिलसिले हैं और इसके साथ वाटर का सबसे बड़ा इशू है जो सिंध को बिल्कुल ही तबाह कर गया है। और ये दरियाए सिंध पे या इस आबी वसाइल पे जो है वो दूसरे सूबों खास तौर से पंजाब में इस तरीके से कब्जा किया वो सब सामने है और इस पे भी बात होगी। तो ये सारे सिलसिले हैं। अब बेरोजगारी का भी आलम है। अब स्टील मिल इतना बड़ा मसला बन गया है कि उसमें से निकाले गए 4,500 PIA में से निकाले गए। तो ये तो सिंध के बड़े मोटे मोटे से मसाइल हैं जिस पे मैंने बात की है, कोशिश की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स का हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं तो वो इस पे ज़्यादा बात करेंगे मेरा ख्याल है। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मैंने टाइम ले लिया। नहीं, कोई मसला नहीं। So I request every speaker if you take like 10 minutes. Reason is because we have usually we take questions. So every 2-3 speaker, I'm going to take few questions also to make this event more interactive. So thank you, Basir Saab. As always, you are great speaker to highlight Sindh violation. You have decades of experience also, which are helpful to understand this thing. So my next speaker, I'm going to request Sai Dilshad Bhutto Saab. Let me introduce him. Sai Dilshad Bhutto is associated with Sindhi People National Movement for 5 decades. He is an intellectual and political analyst. He has produced numerous books and hundreds of articles encompassing political, historical, and social themes on Sindh and Sindhi people. He is always active in the enforced disappearances camps and protests also. Sai Dilshad Bhutto, taan bhale ॻाल्हायो वञे, please. तव्हांखे अनम्यूट करणो पवंदो साईं। हा जी साईं, मां अनम्यूट कयो हाणे, महिरबानी तव्हांजी। हा जी, ॿुधूं था, भले ॻाल्हायो। ॻाल्हाइण शुरू कयां? जी 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 सर, मूं ते 10 मिंटनि जी पाबंदी शुरूअ खां लॻल हुई। हा हा बिल्कुलु, मूंखे ख़बर हुई, हुन करे मां कटे थी सघे थो 8 मिंटनि जी करे छॾी हुजे। घबरायो न, तव्हां सां इलाही ॻाल्हाईंदासीं, घबरायो न। 8 मिंट थी या 15 मिंट थी, बर्दाश्त कजो। सर, दुनिया में रियासतूं ॿिनि क़िस्मनि जूं थींदियूं आहिनि, हिकिड़ियूं कामयाब रियासतूं ऐं ॿियूं नाकाम रियासतूं। हाणे कामयाब रियासतुनि ऐं नाकाम रियासतुनि ते ॻाल्हाइण खां अॻु में थोरो नज़र विझूं था ख़ुदि रियासत जे इर्तका ते, त रियासत जुड़ी कीअं। जॾहिं ही इंसानी मुआशरो वजूद में आयो, जॾहिं ही इंसानी समाज वजूद में आयो, त सभ खां पहिरीं हिकिड़ो समाजी अहदनामो थियो जंहिंखे सोशल कॉन्ट्रैक्ट था चवनि, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन समाजी अहदनामे तहत सोसाइटी हिकिड़ी अथॉरिटी मुंतखब कई ऐं रज़ाकाराना तौर मुआशरे जे समूरनि माण्हुनि रज़ाकाराना तौर पंहिंजा अख्तियार उन अथॉरिटीअ जे हवाले कया, मैंडेट उन अथॉरिटीअ खे ॾिनो ऐं उहा रियासत जी इब्तिदाई शिकिल हुई। उन रियासत जी इब्तिदाई शिकिल खां, उन अथॉरिटीअ खां सिर्फ़ इहो डिमांड कयो वियो त मुआशरे जे जेके शहरी आहिनि, मुआशरे जा जेके माण्हू आहिनि, उन्हनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ कयो वञे। इहे इंसान जा शुरूआती बुनियादी हक़ हा जेके उन वक़्तु बि तस्लीम कया विया ऐं अॼु बि तस्लीम कया था वञनि। अॼु जे 10 दिसंबर जे हवाले सां, अॼु जे यूनिवर्सल यूएनओ डिक्लेरेशन जे हवाले सां, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जे हवाले सां असां ॻाल्हायूं था, उहो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन भी इन्हनि बुनियादी हक़नि खे सभ खां पहिरियों आर्टिकल 3 में तस्लीम थो करे, जान, आज़ादी इंसान जी ऐं उन जे जान जो तहफ़ुज़, उन जे अमलाक जो तहफ़ुज़। इहे बुनियादी इंसानी हक़ आहे जिन ते पहिरियों समाजी अहदनामो थियो हो। मुंहिंजा साईं, हाणे जेका रियासत
जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ न ॾेई सघे, उहा दुनिया जी नाकाम तरीन ऐं नाकारा तरीन रियासत आहे। ऐं मूंखे इंतहाई माज़रत सां चवणो थो पए त जंहिं मुल्क में असां रहूं था, उहा रियासत न इंसानी जान जो तहफ़ुज़ ॾेई थी सघे, न इंसानी लुटमार आहे, वसीलनि जी लुटमार। माल जे तहफ़ुज़ मां मुराद सिर्फ़ इहा न आहे त तव्हांजे घर में बि घिरंदा आहिनि त घणो कुझु थींदो आहे। त न तव्हांजी जान महफ़ूज़ आहे, न तव्हांजा वसीला महफ़ूज़ आहिनि, न तव्हांजूं इमलाकूं महफ़ूज़ आहिनि। जेका रियासत जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ न ॾेई सघे, उहा नाकाम तरीन ऐं नाकारा रियासत हूंदी आहे। इहा ई नाकाम ऐं नाकारा रियासत जी वस्फ़ आहे। मुंहिंजा साईं, ही जेको जंहिं हवाले सां असां हिते वेठा आहियूं ॻाल्हाइण जे लाइ, ही जेको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आहे ह्यूमन राइट्स ते, इहो जुड़ियो छा जे लाइ हो साईं? इहो जुड़ियो हो स्टेट टेररिज्म खे रोकण जे लाइ। आर्टिकल 3 त तव्हांखे चए थो त तव्हांखे हर शहरी जी जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ करणो आहे। शहरी तव्हांखे टैक्स इन जे करे था ॾियनि, सिर्फ़ अथॉरिटी मुक़ररु नथी, अथॉरिटीअ खे चंदे जे शिकिल में हिकिड़ी टैक्स बि ॾिनी हुई, पूरी सोसाइटी गॾिजी, हर फर्द, ऐं अञा बि ॾियनि था। तव्हांखे टैक्स इन जे करे ॾिनी थी वञे त तव्हां अहिड़ा इदारा, अहिड़ा फोर्सिस क़ाइमु कयो जेके उन रियासत जे अंदरि रहंदड़ शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ कनि। जेकॾहिं तव्हां तहफ़ुज़ नथा करे सघो त तव्हांखे टैक्स वठण जो बि अख़्तियार न आहे। पोइ जेकॾहिं तव्हां उहा ज़बरदस्ती टैक्स वठो था त उहा गुंडा टैक्स आहे, स्टेट टैक्स न आहे। हिन महिल असां खां गुंडा टैक्स वरिती थी वञे, छो जो रियासत पंहिंजा फ़राइज़ पूरा करण में, अथॉरिटी पंहिंजा फ़राइज़ पूरा करण में मुकमिल तौर ते नाकाम वई आहे। त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो, अर्ज़ु मां इहो पियो करणु चाहियां थी, जेको ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन आहे, इहो ठहियो ई स्टेट टेररिज्म खे रोकण लाइ हो। जान माल जो तहफ़ुज़, आर्टिकल 5 में इहो लिखियलु आहे त क्रूअल पनिशमेंट ऐं इनह्यूमन ट्रीटमेंट न कई वेंदी शहरनि सां। न उनखे क्रूअल पनिशमेंट ॾिनी वेंदी, न उन सां इनह्यूमन ट्रीटमेंट वारो रवैयो रखियो वेंदो। हिते छा थो थिए? आर्टिकल 7 थो चए त कानून जे नज़र में सभु बराबरि आहिनि, कानूनी प्रोटेक्शन ॾियणो आहे रियासत खे। जेकॾहिं कंहिं ते को जुर्म आहे, कोई इल्ज़ाम आहे, त हुनखे अदालतुनि में खणी वञो, लीगल प्रोटेक्शन ॾियो पंहिंजे शहरनि खे। ईअं न आहे, माज़रत सां टाइम थोरो वधी वेंदो, पर मां कुझु ॻाल्हियूं रखण थो चाहियां माज़रत सां। ईअं न आहे त मुक़दमा बि तव्हां आहियो, अदलिया बि तव्हां आहियो, ऐं इंतज़ामिया बि तव्हां आहियो, जेको वणेव सो कयो, तव्हां को पुछण वारो ई कोन्हे। ही जेके रिवोल्यूशन्स आया, ही जेके जंगियूं थियूं तारीख़ में, ही जेको अवाम विढ़ियो, ही जेको शहनशाह उनखे ड्राथो हुयो, इन जे करे ड्राथो हुयो जो शहनशाह पंहिंजी ज़ात में मुक़दमा बि हुयो, अदलिया बि हुयो, इंतज़ामिया बि हो, मुंतज़िम बि पाण हो, फ़ैसिला बि पाण कंदो हो, कानून बि पाण ठाहींदो हो। हेॾी वरी इंसानी जंग, इंसानी हक़नि जी जेका जंग थी, उहा इन लाइ थी त इन्हनि इदारनि खे अलॻि अलॻि कजे। मुंतज़िम वटि सभु हिते जे खणी वञो इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो, त मां हाणे हुनखे छा डिफाइन कयां? ज़िंदा इंसाननि जा हथनि पेरनि जा न, जीअरनि माण्हुनि जा अज़ाब ॾेई, टार्चर थियल लाश तव्हां ॾिठा हूंदा, उन्हनि सां कहिड़ी वेधन थियल आहे। कंप्लीटली इन वायोलेशन पई थिए, इन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जी कंप्लीटली वायोलेशन पई थिए। कुझु इदारा पंहिंजे ज़ात में शहनशाह खां बि वधीक अख़्तियार था रखनि, न उन लाइ जुडिशरी का माना थी रखे, न उन लाइ कानून को माना थो रखे, न उन जे लाइ इंतज़ामिया का माना थी रखे। इंतज़ामिया बि पाण आहिनि, कानून बि पाण आहिनि, जुडिशरी बि पाण आहिनि, फ़ैसिलो बि पाण कनि, समूरा अख़्तियार। ही कंप्लीटली वायोलेशन पई थिए सर।
पंहिंजी मर्ज़ीअ सां क्रूअल पनिशमेंट था ॾियनि माण्हुनि खे, इनह्यूमन ट्रीटमेंट थी कई वञे, बिना पुछा जे जंहिंजी दिलि थी चवनि उनखे खणी था वञनि ऐं जहिड़े नमूने सां चाहिनि था उन सां सलूक कनि था। जे मर्ज़ी पवनि थी त चालान कनि था, न त गोलियुनि जी लाश उछले था वञनि। ही सॼा ह्यूमन राइट्स चार्टर्स, ही आलमी इदारा, ही आलमी बिरादरियूं, ही सभु इन स्टेट टेररिज्म खे माज़रत सां साईं, माज़रत सां जेको तव्हांजो समाजी अहदनामो थियो उन में ॿ शयूं ॾिनियूं वयूं। जान माल जे तहफ़ुज़ सां गॾु जॾहिं तव्हां टैक्स ॾिनी त उन्हनि टैक्स मां उहे फोर्सिस ठाहिया विया जेके ॿाहिरनि हमले वारनि खां तव्हांजो तहफ़ुज़ कनि, तव्हांजी इमलाक खे, तव्हांजी जान खे बचाइनि। हाणे जिन इदारनि जो, जिन फोर्सिस जो कमु इहो आहे त ॿाहिरें हमले वार खां तव्हांजे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ कनि, उहे जेकॾहिं पाण तव्हां ते गोलियूं हलाइनि, तव्हांजे माण्हुनि खे खणी ज़बह खाननि में जेको आहे ज़बह कनि वञी, जॾहिं उहे फोर्सिस जेके तव्हांजे जान माल जे तहफ़ुज़ लाइ जोड़िया विया आहिनि उहे पाण तव्हांजो क़त्लेआम कनि, त पोइ बाक़ी ॿी टेररिस्ट रियासत छा थींदी आहे साईं? टेररिस्ट रियासत खे सिंह ॼमंदा आहिनि छा? नाकाम ऐं टेररिस्ट रियासतुनि खे सिंह न ॼमंदा आहिनि। इहे ई निशानियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जूं। जॾहिं ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जी वायलेशन थिए, जॾहिं इंसान जे बुनियादी हक़नि जी वायलेशन थिए, जॾहिं इंसान खे ॿियनि शयुनि खे त छॾियो, सिहत खे बि छॾियो, 25 आर्टिकल में सिहत ते लिखियल आहे। माण्हुनि खे अस्पताल में दवाऊं ॾियण त परे जी ॻाल्हि, पर पैसनि सां ख़रीद था करण वञी, उहे बि नकुली दवाऊं थियूं मिलनि, असली दवाऊं बि नथा रखनि। इंसानी जान जी त का वैल्यू ई कोन्हे हिन मुल्क में। हाणे जॾहिं इहा सूरत हाल हुजे, जॾहिं स्टेट टेररिज्म कंट्रोल न थींदी हुजे त असीं छा कयूं? असीं मुहज़ब माण्हू आहियूं, 24 सदीअ जा माण्हू त कोन आहियूं त अमीर तैमूर हमलो कयो, तलवार खणी बीहो, दिफ़ा कयो पंहिंजो पाण। 24 सदीअ जा माण्हू त न आहियूं न, असीं 21 सदीअ जा माण्हू आहियूं। 21 सदीअ जा माण्हू अॼु असां वेठा हिन लाइ आहियूं त आलमी इदारनि खे ॿाॾायूं, उनखे चऊं त रहम कयो, ये स्टेट टेररिज्म पियो थिए, तहफ़ुज़ ॾियो। रियासती इदारा क़तल था कनि, जेके असांजे जान माल जे तहफ़ुज़ लाइ ठाहिया विया आहिनि उहे क़तल था कनि, तहफ़ुज़ ॾियो। आलमी बिरादरीअ खे अपील था कयूं, आलमी इदारनि खे अपील था कयूं, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जे तहत अपील था कयूं। पर जेकॾहिं असांजी अपील न ॿुधी वेंदी त पोइ असां रूसो जॾहिं सोशल कॉन्ट्रैक्ट खे डिफाइन कयो, उन में जनरल विल खे डिफाइन कयो अथई, त जनरल विल में इहो बि चयो अथई त जेकॾहिं अथॉरिटी नाकाम वञे त लाहे उछलियोसि हेठि, पर जे रियासत नाकाम वञे त बग़ावत जो हक़ त आहे न। असीं 24 सदीअ में मोटणु नथा चाहियूं, असीं हथियार हथ में खणणु नथा चाहियूं, असीं बग़ावत न, पर जेकॾहिं आलमी इदारा ऐं आलमी बिरादरी बि तहफ़ुज़ ॾियण में नाकाम वेंदी त पोइ माण्हुनि वटि आख़िरी ऑप्शन इहो आहे त पंहिंजे बचाव लाइ, पंहिंजे तहफ़ुज़ लाइ पाण जेको आहे सो कोशिशूं वठनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं। सही महिरबानी। वॾी महिरबानी। वञिजो न, असां वटि इलाही सवाल जवाब बि आहिनि, विच में पुछंदासीं त तव्हांजी ज़रूरत हूंदी। महिरबानी तव्हांजी। थैंक यू साईं दिलशाद भुट्टो साहब। महिरबानी सर, महिरबानी। Thank you. So I'm going to request my next speaker. It is fair to say that I probably need long time to introduce him because person like him person like him, like he's a source of inspiration for all of us. Honestly, his writings, his talks, his participation in protests give hope to all of us that something better will happen and we continue to do our struggle. Sai I.A. Rahman, also he is famously known as I.A. Rahman, which is Ibn Abdul Rahman, is a Pakistan peace and human rights advocate.
who dedicated his life for this cause. He was chief editor of Pakistan newspaper, Pakistan Times newspaper in 1998, 89. He is the founding chair of Pakistan India's People's Forum for Peace and Democracy. He is long time associated with HRCP. He is still very active, right, for Delhi Dawn also. It is absolutely honor and privilege that he is here with us. So, Sai Ayer Rahman, please go ahead. सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को. Can you hear me now? Yes, sir. Loud and clear. This is we are discussing human rights situation in Pakistan, which has never been very good. People have been struggling. You see, I would like to emphasize the fact that the struggle for the rights of the people in Pakistan has been becoming stronger and stronger. There was a time when people's rights could be trampled under feet by anyone, and there was no protest. Can you hear me? We can hear you, sir. So while we discuss the violations of human rights, the problems that ordinary people face, especially the poor people face, we should also recognize the fact that people have voice now. People can protest now. People have been protesting, people have been fighting. And it is not only institutions like Human Rights Commission of Pakistan or other organizations, ordinary citizens also, everywhere, have been able to raise their voice against them. The problem is that the Pakistan as a post-colonial state is not very different from the colonial state. And that affects the rights of all people. In some areas more so, in some areas less. There are problems in Balochistan, there are problems in Sindh, there are problems in Khyber Pakhtunkhwa, there are problems also in Punjab, although on a fewer scale. So this is a continuous struggle that we have to make. Unfortunately, the state structure is quite anti-people. It's not responsive to the voice of the depressed and oppressed people. And that creates problems for all of us. Now, the situation is that Hello? Yeah, we can hear you, sir. Keep going. Now, we should also look at the fact that the resistance to oppression is increasing. That people are taking risks and addressing these issues. I would like to say some of the chronic problems are enforced disappearances. There is such a stigma and a slur on the face of Pakistan that enforced disappearances have not been checked, and people disappear, and sometimes dead bodies are found by the roadside. It is a very serious problem in Pakistan, and unfortunately, the state has not responded to it, not addressed it. The question of minorities. Now, what we may say that minorities are given all rights, but the fact is that they are not.
In Sindh, for instance, forced conversions, abduction of minority girls, and conversion to Islam is being done forcibly. These are serious problems. There are disappearances in Sindh also. Yeah. So what we feel is that in particular some of the areas of Pakistan, disappearances, forced conversions, denial of rights, and also the justice system is not in a position or not attuned to redress their grievances adequately. This is an uphill task in Pakistan, and human rights activists have always been struggling to achieve. The picture is far from satisfactory. It is a matter of serious concern to all human rights activists that we have not been able to check forced conversions in Sindh. We have not been able to check disappearances in Balochistan. We have not been able to check the abuse of power. Now, what is most worrying is that there are institutions, particularly in Sindh, who have taken up the task of oppressing the members of the minority communities, taking over their property, converting their women, and I must say the state has not been able to discharge its responsibilities in these matters, and it's a matter of concern for all of us. Since we are discussing the situation in the context of human rights and in the context of the Universal Declaration of Human Rights, I think we have to go much more faster, and the road ahead is not at all easy before we can say that the people of Pakistan in all parts of the country are enjoying their rights equally. There are areas in which people in Sindh suffer more than others. There are other areas in which the people of Balochistan suffer more than others. So the situation is far from satisfactory, but we must acknowledge the fact that people have started speaking. People have started voicing their concerns. You see, when we started work of Human Rights Commission of Pakistan, we had serious problem of bonded labor in Sindh. We had serious problems of conversion in Sindh. And we are still struggling against it. What we have a serious complaint is that there are regular institutions which carry out these anti-people activities, and they have not been checked. There are institutions in Sindh who have taken upon themselves the converting people forcibly, abducting women forcibly. So that way is a long struggle, a long haul. But while we take note of the violations, we should also acknowledge the fact that there are brave men and women in all parts of the country, including Sindh, who have been struggling and who have been struggled at the risk of their life, their liberty, but they continue to do so. So I would like to conclude on a note that these problems are huge and they seem insoluble. But we feel that given the goodwill of the people, I have no hesitation in saying that the state is not cooperating. State does not recognize its responsibilities to the extent it should. And that is aggravating the situation further. Thank you very much. Thank you.
Thank you, Saeed Rahman Saab. I have to take few questions before I invite my next speaker. So first question I have with Rahman Saab especially. सर सारी उम्र आपने जदोजहद की है इंसानी हकूक के बारे में, और आप स्पेशली जो संत के लोगों के बारे में भी आपने आवाज उठाई है, तो आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि कुछ होगा इस रियासत में, लोगों को कुछ हुकूक मिलेंगे, उन पे जुल्म और ये तशद्दुद वाली मसला कुछ बंद होगा? अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर नजर आता है, इसलिए कि रियासत सिर्फ ताकत पर अपनी निसार करती है। जब तक रियासत इंसाफ पे निसार नहीं करेगी, अवाम की मुश्किलात खत्म नहीं हो सकेंगी। देखिए, यानी ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात कहनी पड़ती है कि हमारी इस रियासत को अब अगले साल 75 साल हो जाएंगे, 2022 में, लेकिन अभी तक वो इंसान की और अजमत को पहचान नहीं सकी। आदमी की शहरी की हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सिटीजनशिप का तस्वुर नहीं है। हालांकि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की तकरीर में अपने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो सिटीजनशिप के हवाले से सब बराबर हैं। नहीं है बराबर, पाकिस्तान सब शहरी बराबर नहीं है। तो बहुत बहुत लंबा भी सफर है, और उसकी वजह यह है कि अभी तक रियासत ये नहीं पहचान सकी कि जिस मुल्क के शहरी बराबर नहीं है, उस मुल्क में न जमहूरियत हो सकती है न इंसाफ हो सकता है। ये हमारी सूरत हाल है। थैंक यू। जैसे शेख अयाज ने कहा था, हुड़क हलो दिमा हलो, तो continue to work for our rights. We bring up, I think, honestly speaking, we all are missing Asma Jahangir at this point. Whenever this human subject come into picture, Asma Jahangir always remind us. I remember I met him only once in my life, 1994-95, when I was in college. Not younger than I am now. And she brought up this issue. ने कहा जैसे bonded labor करना चाहता हूँ, तो ये bonded labor पे वो जाके उन लोगों को एग्री करते थे कि and we are taking case your court and you have to just show up and then we'll take care of it. तो सुबह जब वो कोर्ट पे पहुंचते थे, उनके जो बॉन्डेड लेबर थे उन पे काफी प्रेशर पड़ता था, तो वो के केस खत्म करें तो वो जाके अदालत में कहते थे कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट बॉन्डेड लेबर, वी आर फाइन। इन्होंने बगैर पूछे अदालतों में हमारे केस दाखिल कर दिए। तो वो उन्होंने कहा कि जज फिर हमें लानत मलामत करते थे कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों का केस बगैर पूछे डालते हैं। And last thing which she said, I will never forget, is अच्छे काम के लिए जलील भी होना पड़ता है. So that is the source of inspiration for me and probably a lot of us. जो अच्छा काम है उसमें जलील होने की परवाह ना करें. Just keep going. Thank you. साईं, let me unmute you. साईं, आपको unmute करना पड़ेगा रहमान साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो. I can't hear you, Sai. You are muted still. देखिए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तहरीक का जिक्र जो है वो आसमा जहांगीर के बगैर नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि वो बड़ी कदावर शख्सियत और सही माना में
आई वुड से कि ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में अगर जान डाली किसी ने तो दोरा पटेल और आसमा जहांगीर ने। ये हमारे लिए अभी तक और हमेशा के लिए मिसालें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत दुश्वार है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया, किसी इंसाफ पर मबनी रियासत का पहला उसूल ये है कि सब शहरी बराबर हैं। पाकिस्तान में सब शहरी बराबर नहीं है। वो मजहब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है, जिन्स की बुनियाद पर तफरीक की जाती है। औरतें मर्द के बराबर नहीं है, गरीब अमीर के बराबर नहीं है, हारी रंगदार के बराबर नहीं है। तो ये जो तफरीक है सोसाइटी में, ये हमें एक जालिम माशरे की तरफ ले जाती है। इसमें इंसाफ नहीं हो सकता। Thank you. So I'm going to ask my next speaker to speak. My next speaker is Adi Surat Lohar. She is chairperson of Voice for Missing Person of Sindh. She struggled a lot of missing persons since her father Hidayat Lohar was kidnapped in daylight from his school where he was teaching. Her father was disappeared for about a couple of years. He was eventually released. Since then, she has struggled for missing person and organized demonstration, marches, and hunger strike. She has now become symbol of struggle in Sindh for enforced disappearance. To be honest, she is the youngest speaker in this panelist, but her struggle is source for inspiration for a lot of people. You can imagine the brutal environment we have, and a girl so young, without taking into consideration her struggle, she come out and speak for every person. It's very commendable, and honestly speaking, she is source for inspiration for a lot of us who's in Sindh or outside of Sindh. So Adi Surat Lear Tangal hai bale. Thank you, Raf. First of all, I सभिनी खे त पहिरियां त शाबाश ॾींदसि, जस्ट ॾींदसि मुसलसल वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस तव्हां सही ॿुधायो त 2017 खां वठी जॾहिं बाबा जी डिसअपियरेंस थी त उन खां पोइ इहे मां एक्टिव थी आहियां ऐं मूंसां गॾु कुझु सुञा जेके ॿिया साथी आहिनि। त वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस उन खां अलावा जेके बि साथी ॻाल्हाए वियासीं, दिलशाद भुट्टो ऐं वसीम नवीद साहब ऐं AR रहमान वारा, इन्हनि जो तमामु सुठो साथ रहियो आहे। न सिर्फ़ु मतिलबु उहे असांजी सोशल मीडिया जे थ्रू ई, छो करे मिसिंग पर्सन जो इशू एतिरो आहे जो की उन ते केरु ॻाल्हाइण लाइ तयारु न हूंदो आहे, पर लाज़िम आहे उन ते केरु ॻाल्हाईंदो न त दुनिया खे अॻियां कीअं ख़बर पवंदी त ही हालातनि जे अंदरि हलनि था पिया। उन्हनि सभिनी साथियुनि खे जस्ट आहे त हू पंहिंजी बीमारी या कीअं बि करे ऐं हू अचनि था ऐं ॻाल्हाईंदा। साईं दिलशाद भुट्टो तमामु बीमार बि रहंदो आहे, पर हुनखे शाबस आहे त असां जॾहिं प्रेस क्लबनि ते वेहंदा आहियूं त उहो मुसलसल असां गॾु ईंदो रहियो है। मैं उर्दू में बात करूंगी। मैं अदा ने तो मेरे तारीफ करवा दिया, सूरत लॉ वाइस फॉर मिसिंग पर्सन की कन्वेनर। मिसिंग पर्सन का इशू अभी पाकिस्तान के अंदर हम बात कर लें तो अभी हम सिंध के बारे में बात करें, लेकिन मिसिंग पर्सन का इशू इतना मतलब सेंसिटिव है जो कि पाकिस्तान के अंदर तीनों सूबों में, पंजाब में तो है लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर नहीं है। कुछ कम केसेस वहाँ के आते हैं, कुछ जर्नलिस्ट या ऐसा कोई, इनको 1-2 दिन में भी फिर रिहा किया जाता है उनको जल्दी से। लेकिन बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा, यहाँ पर बहुत सारी मतलब इंसानों के साथ बहुत बड़ा बदसलूक किया जाता है। मतलब इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस क्लियरली ये लफ्ज़ जो कि इंटरनेशनल लॉ खुद इसको मतलब एक डिक्लेयर कर चुका है कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, जो वो रियासत की तरफ से ये अमल होता है, इसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। मतलब ये लफ्ज़ खुद एक रियासत को डिक्लेयर करता है कि तुम दहशतगर्द हो। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि यहाँ की रियासत जो है वो खुद दहशतगर्दी कर रही है यहाँ के लोगों को उठाकर उनको लापता करके। क्योंकि किसी भी शख्स को लापता कर देते हैं तो उनसे ये वो सोचें कि वो सिर्फ एक शख्स को तो लापता करते हैं, लेकिन उनके साथ जो इंसानी हकूक़ की जो संगीन जो लताड़ है वो उसको पामाली करते हैं। उसके अलावा उसके साथ जो उनकी फैमिली होती है वो ये बात नहीं सोचते, या फिर हम ये सोच लें कि उनके पास ऐसा साथ तो है ही नहीं। इस सियासत को
ये लगता ही नहीं है कि यहाँ पर हम इंसान हैं, वो हमारे लिए कोई इंसानी हकूक़ समझें कि इनके लिए भी कोई इंसानी हकूक़ है। जब हमारे प्यारों को हमारी आँखों को सामने उठाया जाता है तो उस कैफ़ियत को एक बंदा वही समझ सकता है जिनके साथ वो हालात होते हैं। अब रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पर मैं बशीर शर और गुलाम रसूल शर की बात करूँगी कि बशीर शर जो कि है वो बिल्कुल भी 16 साल का मतलब लड़का है, टीनेजर, बिल्कुल उसका CNIC भी नहीं बना है। उसकी तस्वीर में दिखाऊँगी तो ये एक छोटा-सा बच्चा है, आप देख लें कि इस बेचारे को तो दाढ़ी मूंछें ये भी नहीं है, इसकी एज ही बिल्कुल छोटी-सी। अब इसके साथ इसके दूसरे भाई को भी उठाया था इन लोगों ने रात को। तो उस वक़्त एक बंदा सोचे कि जब उनके घर में आप घुसते हैं इतने छोटे से बच्चों को और उसके साथ उसकी माँ की आप दुपट्टा जो उसको पहना हुआ है और उसकी दुपट्टा आप उतारते हैं और उससे छीन के उनकी बच्चों बच्चों की आँखें बाँध कर आप लेके जाते हैं, तो वो कैसी कैफ़ियत है। उस वक़्त तो मतलब क़यामत से भी ज़्यादा वो मतलब वो कैफ़ियत होगी उस फ़ैमिली के लिए, वो बेबस और लाचार होते हैं। और दूसरी बात, जब भी हम मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान की रियासत या उसके इदारे जब भी वो अपने या बाहर किसी भी इदारे को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये बंदा किसी इलीगली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या ये दहशतगर्द है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आप उन बच्चों को, इन बेटों को, हमारे कौमी कारकुनों को हमारी आँखों के सामने हमारे घरों में से उठा के लापता कर देते हैं। फिर बाद में उसको डिक्लेयर करते हैं कि वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द भी तब होंगे जब आप उनको किसी कार्रवाई में पकड़ें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें, आप उनको फिर वहाँ पर करें। तो दूसरी बात वहाँ पर ये भी आती है कि चलो ठीक है, आप उनको दहशतगर्द भी करार देते हैं, तो आपकी आँखों में, आपकी नज़र में वो बेटा या बच्चा दहशतगर्द भी है, तो उसके लिए भी तो कानून मौजूद होता है। यहाँ पर आप आइन पे अमल नहीं करते, यहाँ पर कानून की पामाली हो रही है। आइन की पामाली हो रही है क्योंकि ये ये कानून, ये आइन खुद इनका इदारों का बनाया हुआ है, लेकिन ये इन पर अमल नहीं करते। फिर हमारे लोगों को उन पर टॉर्चर करते हैं। यहाँ पर तो वो लेके जाते हैं, लेकिन टॉर्चर वहाँ पर जो करते हैं वो तो हमें नहीं पता किस हाल में उनको रखते हैं। लेकिन जब बंदा वापस आता है, खुद हम उनको जब देखते हैं उनकी हालत, मेरा बाबा हिदायतुल्लाह लोहा जब वापस आया है तो अभी उसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसका बीपी बिल्कुल भी हाई रहता है, उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, उसकी बॉडी शिवरिंग करती है। मतलब वो बंदा नॉर्मल ही नहीं होता। पता नहीं वो क्या चीज़ उनके साथ करते हैं कि जब वो वापस आता है तो वो नॉर्मल नहीं आता। सारंग जोयो का केस हमारे सामने है। जब सारंग जोयो को इन लोगों ने उठाया तो उसके पास उनके निशानात उसके जिस्म पर बिल्कुल शो हो रहे थे, तो उनके साथ उन लोगों ने क्या हालत की है। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे साथ तो ये मतलब नाइंसाफ़ी है, ज़ुल्म सालों से होती आ रही है। 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। तो अगर सिचुएशन हम पाकिस्तान की देख लें और सिंध की देख लें तो यहाँ पर तो इंसानी हकूक़ का हम जनाज़ा ऐसा समझे कि रोज़ इंसानी हकूक़ का जनाज़ा रोज़ निकलता है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर हमारी जो हिंदू लड़कियाँ हैं वो सेव नहीं हैं। उनका जबरी तौर पर मज़हब जो है वो तब्दील किया जाता है। उसके अलावा ब्लास्फेमी के केस भी ज़्यादातर होते हैं जिसके साथ जिसके ज़ाती मतलब जो रंजिश होती है तो फिर उन पर वो इल्ज़ामात लगाते हैं ब्लास्फेमी के। उसके अलावा रियासत की तरफ से अब हमारे जो भी कौमी कारकुन या वो एक्टिव होते हैं या मिसिंग पर्सन्स के अलावा या सिंध के अंदर जो भी इशू होते हैं उनकी मसाइल पर अगर वो जदोजहद करते हैं तो उनके घरों पे रेड करते हैं, उनको उनको खुद को उनको मारते हैं और उनको डिसअपियर करके उन पर टॉर्चर करते हैं। तो हालात पाकिस्तान में ये है कि हम जुल्म भी हमारे साथ हो रहा है, धरती भी हमारी है, हमारे वसाइल को उनका कब्ज़ा है और हम खुद जो इसके मालिक हैं इस धरती के, हम मतलब कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अगर जद्दोजहद करें, बाहर निकलें तो फिर प्रेशराइज़ किया जाता है, फैमिली को प्रेशराइज़ किया जाता है। तो ये बातें सारी सबको पता है, लेकिन फिर भी हम इस नेटवर्क के थ्रू आप सबको जो भी सुनने वाले लोग हों, हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर ये हालात मौजूद है। उसके अलावा हम बार-बार जो भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तंज़ीमें होती हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर ये ज़ुल्म हो रहा है, हमारे लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जाता है। कुछ तंज़ीमें होती हैं जो उन पर काम करती हैं, लेकिन यूएनओ भी काम कर रहा है, लेकिन इतने एफ़र्ट्स नहीं अभी तक नज़र आ रहे। लेकिन फिर भी हम पर ये फ़र्ज़ आयद है कि हम अपनी जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, लाज़िम हम
بتائیں تو اس کا سلوشن انشاءاللہ آگے نکل آئے گا، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے. اور دوسری بات بتاتے چلوں تو اس وقت جو سندھ کے اندر جو ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ابھی تک جو ان کی فگر ہماری مطلب 60 تک ہے، لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں، ہمارے پاس فگر تو موجود ہے لیکن کچھ ایسی فیملیاں ہوتی ہیں جو وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے لوگ مطلب ایسے لاپتہ ہو گئے، تو ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. تو 60 تک ابھی تک ہمارے لوگ جو لاپتہ ہے، لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اوور آل اس کے حساب سے ہمارے پاس 80 تک لوگ ہیں جو لاپتہ ہے، کیونکہ فیملی ان کو اون نہیں کرتی. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن فیملی لا تعلقی کر دیتی ہے، تو پھر ہم اس چیز کو ان کے حساب سے ہی چلتے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ایک نیاز لاشاری تھا، کیونکہ اس کو 2 مرتبہ اٹھایا گیا تھا، پھر اس کی ڈیڈ باڈی دی گئی تھی. پھر اس کے علاوہ باقی ہمارے پاس ایک جو پرانا کیس ہے وہ صحبت کھوسوں کا کیس ہے، جو 2011 سے لاپتہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے. سہیل رضا بھٹی، اس کو 5 سال 6 سال ہو گئے، لیکن اس کا نہیں پتا کہ وہ کہاں پر. اس کو خود مطلب ان کی کالج جو ہے وہاں سے اٹھایا تھا پرنسپل کے سامنے، لیکن ابھی تک ان کا کیس بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے اور ان کی کوئی خبر نہیں ہے. اور بلوچستان کے حالات تو ویسے بھی سب کو پتہ ہے، پختونخوا میں بھی سیم ہی حالات ہے. تو بس یہی بات ہے، اور ہم سارے لوگوں سے جو سننے والے ہیں ان سے بھی یہی امید کریں گے کہ آگے یہ جو فور ڈسپیرنس کا کیس ہے ان کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ فیملی ان کی بڑی تکلیف سے بڑی اذیت سے زندگی گزارتی ہیں. تو کوئی فرد گھر میں نہیں ہے، ایک تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ زندہ نہیں ہے، لیکن ایک جن کے مطلب ہے بھی یا نہیں بھی، تو اس کشمکش میں زندگی گزارتے ہیں اور بڑی اذیت سے زندگی گزارتے ہیں. تو باقی ساتھی بھی بات کریں گے، آپ ان کو موقع دیں. Thank you. Just I have a quick question. Adi, तव्हां इहो ॿुधायो, तव्हां खे लख शाबस, तव्हां एॾी जदोजहद कयो था, पर हूअं त जेको बि माण्हू आवाज़ उते इंसानी हक़नि ऐं स्पेशली सिंध में कमु करे थो, उहो ॾाढो अताब में आहे, प्रेशर में आहे, डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट थ्रेट्स था मिलनि हुनखे. पर एज़ ए छोकिरीअ जी हैसियत में तव्हां जेको एक्टिविज़म कयो था, त उन जे बारे में ॿुधायो त छोकिरीअ जी हैसियत में कहिड़ा तव्हांखे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियणो थो पए. हाँ, यहाँ वो क्वेश्चन मेन भी है, यहाँ अहम भी है. छोकरिन जे हिसाब से अब लड़कियों की बात करें कि सिंध के अंदर खास तौर पे यहाँ पर मतलब एक लड़की का निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रियासत तो वो उससे कोई उम्मीद अच्छी की कोई उम्मीद नहीं कर सकते. मैं 2017 से लेकर अभी तक एक बात करूँगी, क्योंकि थ्रेड तो हमें सीधे तरीके से थे, वो डायरेक्टली हमें फ़ोन नहीं करते हमारे पर्सनल नंबर पर, लेकिन हमारे कज़न के नंबर पर या सिस्टर के नंबर पर वहीं पे कॉल देते हैं. कोई बंदा वापस आ जाता है, उनको मतलब कुछ भी मैसेज कहलवा देते हैं, थ्रेड देते हैं कि भाई ये ना उतरे. अब अकेले निकलना, क्योंकि लास्ट में निकलना भी है, जब निकलते हैं तो ये इनके कुछ बंदे हैं जो पीछे भी करते हैं, फिर इनके पास कुछ हथियार भी होते हैं. फिर इन सिचुएशन का भी जब हम 2017 से स्ट्रगल कर रहे तब बहुत हाईलाइट हुआ था केस, और बहुत ही मतलब इनके ऊपर भी शायद प्रेशर था, तो ये प्रेशराइज बहुत करते थे कि जैसे बाइक होगी वो पीछा रिक्शा का पीछा कर दे इस तरह से. उसके अलावा या हम मेरी टिकट थी, हम इस्लामाबाद जा रहे थे, तब जो कैंप लगी थी इस्लामाबाद में, तो उन लोगों ने कैंप वहाँ से हटा दी थी, तो मजबूरन वहाँ भी हमें जाना पड़ा था क्योंकि लड़के थे वो. तो वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पर भी इस तरह से हम टिकट बुक कराएंगे, भाई रेंजर्स वाले सीधे से वो वर्दी में आके मतलब हमें जिस ऑफिस हम जा रहे हैं वहीं पर आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, यहाँ ये एक किस्म का थ्रेड है कि भाई आप ना निकले. और उसके अलावा ज़्यादातर कुछ लड़कियों के साथ फैमिली का भी बहुत बड़ा मसला होता है कि वो लड़कियों को एक तो छोड़ते नहीं. शाज़िया चांडो की बात कर लें तो वो भी बेचारी अपने भाई के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसका रिश्ता था, तो वो रिश्ता उसका इस वजह से टूट गया कि भाई तुम स्ट्रगल कर रही हो इस चीज़ के लिए. तो ये बहुत मतलब चैलेंज होते हैं लड़कियों के लिए, या कुछ और भी आम लोग भी होते हैं, लड़की का बाहर निकलना अकेले तो वो भी लोग परेशान करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है. इस वजह से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो हम मीडिया पर भी नहीं रख सकते या नहीं बोल सकते. तो रियासत का तो होता है, लेकिन अपनी फैमिली का भी बहुत सारा कुछ लोगों के साथ प्रेशर होता है कि वो उनको इजाज़त भी नहीं देते हो तो आवाज़ निकालने. महिरबानी साईं, महिरबानी अदी, अल्लाह तव्हांखे सलामत रखे, कमु कंदा रहो. तो I'm going to request my next speaker.
And my next speaker is Dr. Mehdi Hassan. He is a renowned Pakistani journalist and media historian and professor of journalism and mass communication at Beacon House National University. A long-time human rights activist and member of Human Rights Commission of Pakistan Governing Council. He is current chairperson of Human Rights Commission of Pakistan and dean of School of Media and Communication at Beacon House National University, University Lahore. Dr. Mehdi Hassan has written many papers and participated in many seminars. It is again our honor that he is here. So Dr. Mehdi Hassan, please go ahead. सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट नहीं, आई कैन नॉट हेयर यू स्टिल. अनम्यूट का एक ऑप्शन होगा, आपको स्पीकर टाइप एक आइकन होगा, उसको अगर हिट करेंगे तो आपको शायद कोई हेल्प कर रहा था. कैन यू रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू? डॉक्टर साहब से कहिए कि लेफ्ट साइड पर सबसे नीचे नजर आ रहा होगा माइक, उसको क्लिक कर दे. जी, I think he is asking for help. So we can wait, I think. I am actually asked, I cannot unmute him, that's the issue. I can only request him to unmute. That's a strange here. I can mute. जी अब हुआ. जी जी जी, loud and clear. Thank you. देखिए जो बातें हुई हैं अब तक, इसमें दो बहुत सिंपल बातें हैं. ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक जो है वो एक जमहूरी रियासत से है. डेमोक्रेटिक स्टेट हो तो ह्यूमन राइट्स होते हैं. पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत नहीं है. पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है और मजहबी रियासत और जमहूरी रियासत दो मुतजाद चीजें हैं. कोई मजहबी रियासत जमहूरी रियासत नहीं होती, क्योंकि जमहूरियत जो है वो सेकुलर होती है. पाकिस्तान में रिलीजियस माइट इतनी इन्फ्लुएंशियल है, वो बहुत छोटी है, अक़लियत में है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि वो तमाम मामलात को इन्फ्लुएंस करती है. और जो भी हुकूमत होती है, न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि माजी की हुकूमतें भी माजरत खाना रवैया इख्तियार कर लेती हैं जब कोई मजहब का मामला आता है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं. दूसरा मसला, फौज का हवाला दिया गया था इब्तिदा में. पाकिस्तान को डे वन से एक सिक्योरिटी रियासत करार दे दिया गया था और ये बताया गया था लोगों को, जमहूरियत को अवॉइड करने के लिए मजहब को इस्तेमाल किया गया था और ये बताया गया था लोगों को कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा हिफाजत के लिए फौज को जो अहमियत दी गई, वो अहमियत की वजह से अब फौज हमारी, जिसको कहा जाता है एक पेज पे है, मेरा ख्याल है पेज पे नहीं है, एक किताब में आ गई है और बजाय सब सर्वियंट होने के इलेक्टेड गवर्नमेंट के, वो पेज पे उसके साथ ही बैठती है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जमहूरियत की नफ़ी है और बग़ैर जमहूरियत के ह्यूमन राइट्स नहीं होते. जहाँ तक मिसिंग पर्सन्स का ताल्लुक है, किसी महज़ब सोसाइटी में ये लफ्ज़ होना ही नहीं चाहिए. मिसिंग पर्सन्स का जो लफ्ज़ है, जो टर्म है, ये किसी महज़ब सोसाइटी की टर्म नहीं है. तो मैं ये समझता हूँ कि 72 साल में पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान एक कामयाब रियासत नहीं बन सका.
कामयाब रियासत को कामयाब कौम बनाया करती है। हम कामयाब कौम भी नहीं बन सके अब तक। उसमें कई बहुत दफा तब्दीलियां आई। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बानी थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक नारा लगाया था मुस्लिम इंडिया का। उस मुस्लिम इंडिया से 1940 में एक थोड़ा सा टोटा निकाल के, एक टुकड़ा निकाल के पाकिस्तान बनाया गया। 24 साल बाद मेजॉरिटी प्रोविंस अलग हो गया क्योंकि जमहूरियत पे हमने अमल नहीं किया। तारीख को हमने डिस्टॉर्ट किया। हम तारीख को तारीख के तौर पे न लिखते हैं, न तारीख के तौर पे पढ़ाते हैं। हम तारीख को अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों, अपने मजहब और अपने मसलक के मुताबिक लिखते हैं और पढ़ाते हैं। हम तो बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि एक शायर फिलोसफर ने ख्वाब देखा था तो पाकिस्तान बन गया। तो अब इस किस्म की तारीख जो है, उससे कोई मुल्क, कोई रियासत कामयाब रियासत कैसे बन सकती है? तो ये तमाम चीज़ें काबिल गौर हैं। और जहाँ तक फोर्स कन्वर्जन का ताल्लुक है, मैं बहुत दफ़ा एक मिसाल दे चुका हूँ। और जब वो जो 2 हिंदू लड़कियों का मसला हुआ था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक गया था, मैंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सवाल किया था कि जब जिन्ना ने अपना मसलक तब्दील किया था तो किसी मदरसे से या किसी मुल्ला से उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया था। उन्होंने बम्बई की अदालत में जाके एफिडेविट दिया था कि मैं और मेरी बहन आज तक इस्माइली अकीदे पे थे, आज से हम अपना अकीदा तब्दील कर रहे हैं और असना अशरी अकीदा अपना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। अगर हम तारीख को सीधा कर दें, तारीख की डिस्टॉर्शंस ख़त्म कर दें, तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जमहूरियत के बगैर ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जा सकता। और जमहूरियत के लिए मज़हब को सियासत से ख़त्म करना पड़ेगा। जो इस मुल्क के फाउंडर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को कहा था, यहाँ उसका हवाला भी दिया गया है अभी। उन्होंने तो ये कहा था कि पाकिस्तान एक मॉडर्न, एक डेमोक्रेटिक और एक रवादार रियासत होगी जिसमें सियासत में मज़हब का कोई अमल दखल नहीं होगा। उनके अपने अल्फाज हैं कोट एंड कोट में, यू मे बी ए मुस्लिम, यू मे बी ए नॉन मुस्लिम, इट हैज़ नथिंग टू डू विद बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर ऑफ फेथ फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो ये जो पर्सनल मैटर है, ये हमारे यहाँ पर्सनल नहीं रहा। ये हर दूसरे आदमी का ये मसला है कि मेरा अपने क्रिएटर से क्या ताल्लुक है, वो मुझे गाइड करता है कि क्या होना चाहिए। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ना हम कामयाब रियासत बन सकेंगे और ना एक कामयाब कौम बन सकेंगे। और जब हम रियासत कामयाब नहीं होंगे और एक जमहूरी रियासत नहीं होंगे, तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो उस तरह के ह्यूमन राइट्स पे अमल नहीं होगा यहाँ जो तमाम दुनिया जिसको एक्सेप्ट करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। तो सर मुझे ये बताएं, मेरा एक सवाल है बिफोर आई आस्क माय नेक्स्ट स्पीकर। तो सिंधी तो इस जो थे, सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, तो वो तो इस आसरे पे ज्वाइन हुए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट शैल बी इंडिपेंडेंट एंड सवेरन। अब वो जो 1940 का रेजोल्यूशन है उस पर तो अमल नहीं हो रहा। तो अब क्या आप समझते हैं एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सिंधी कौम को एज ए नेशन को हक नहीं है कि वो कहे कि भाई अब हमें हक दिया जाए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट वी विल रीनेगोशिएट दिस होल थिंग? देखिए,
3 फॉर्मूले थे ट्रांसफर ऑफ पावर के जब हम अंग्रेज के गुलाम थे। एक फॉर्मूले में ये सजेस्ट किया गया था कि सूबों को इजाजत होगी अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले में ये कहा गया था कि वो फेडरेशन बना सकते हैं और तीसरे फॉर्मूले में कन्फेडरेशन का था। पहला फॉर्मूला जो था इंडिपेंडेंस का उसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से वो खत्म हो गया। कन्फेडरेशन और फेडरेशन में से मुस्लिम लीग ने फेडरेशन का फॉर्मूला एक्सेप्ट किया था। फेडरेशन वो कामयाब होती है जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी होती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सूबाई खुद मुख्तारी को कभी तस्लीम नहीं किया गया। खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान जो हैं वो बैकवर्ड हैं सियासी तौर पे और हमेशा से बैकवर्ड थे। पाकिस्तान पे 62% पंजाब हुकूमत करता रहा और जब पंजाब की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया बंगाल ने तो सिर्फ 24 साल बाद जमहूरियत ना होने की वजह से बंगाल हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा और हम आज भी जमहूरियत पे अमल नहीं करते। हम तो ऐसे आदमी को हुकूमत दे देते हैं जिसका सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, एक टूर्नामेंट जीतो और प्राइम मिनिस्टर बन जाओ मुल्क। तो लगता अब यही है कि हम दुआ करेंगे अब फिर ना कोई हम कभी भी पाकिस्तान कोई और टूर्नामेंट ना जीत जाए। नहीं, मैं तो कहता रहता हूं कि हमने हॉकी के 5 इंटरनेशनल मारे हैं, जीते हैं। नंबर 1 थे हम हॉकी में जी। लेकिन वो क्योंकि हॉकी खेलने वाले प्रिविलेज क्लास के प्लेयर नहीं थे, इसलिए उनको कोई पूछता नहीं, वरना कम से कम वजारत ही दे दो उनको। Thank you, sir. So please stay around. We have more questions coming in after a few speakers, but I'm going to request my next speaker, Adif Farah Isfahani. Adif is a global fellow at Woodrow Wilson International Center for Scholars, author of Purifying the Land of Pure Pakistan Religious Minority, senior fellow at Religious Freedom Institute. She's a foreign policy global thinker. In 2015, she was a Reagan Pascal scholar at National Endowment for Democracy in Washington, D.C. Ms. M.S. Isfahani was a public policy scholar at Woodrow Wilson Center from 2013 to 14, and a Pakistani politician. Pakistan has served as a member of parliament and media advisor to President of Pakistan from 2008 and 2012. For Sindhis, especially, her tremendous work for the forced conversion of Sindhi Hindu girls into Islam is so exemplary. She wrote up papers and gave interviews and highlighting this issue. We really appreciate your, especially in this field of work. Adi Farah, please go ahead. I think you are mute. Meeting. Yeah, I can hear you now. Thank you so much to the World Sindhi Congress for inviting me here today. I am in such august company and I'm following such renowned Pakistanis here today that I'm humbled. And I will keep my address in English for those people who are tuning in from overseas, younger Pakistanis, younger Sindhi Americans, Sindhi British, and people from all over the world. I've been privileged to be born in Sindh, and as a citizen of Sindh, the whole conversation among women and forced conversions to Islam is something that is very, very close to my heart.
today, when we are looking at the situation which many speakers have spoken about today, the human rights situation in Pakistan has attracted negative commentary from the world for years. As a woman and as someone who writes about the persecution of religious minorities, I will focus my comments on these aspects of the grave human rights crisis in Pakistan, particularly of Sindh. According to Human Rights Watch, their World Report of 2020, women and religious minorities in Pakistan continue to face violence, discrimination, and persecution, with authorities failing to provide adequate protection or hold perpetrators accountable. Pakistan has failed in the protection of its religious minorities. Pakistan has never seen its religious minorities as equal citizens. Pakistan has completed a course of otherization for Pakistan's minorities and has basically made them less than human. Religious extremists, which has been mentioned before, supported by the state, have targeted different minorities at different times as part of their effort to make Pakistan religiously pure by their own standards. We can look back to the Civil War and the terrible pain we created to our Bengali brothers and sisters at the time of 71. Beginning with Hindus and Sikhs at the time of partition to the constitutional amendment and special laws denying Ahmadis the right to freely practice their beliefs, Pakistan has repeatedly failed to fulfill the standards of the Universal Declaration of Human Rights. The powerful in Pakistan worry about Pakistan's international image, not the substance of how they treat dissidents and minorities. There have been symbolic gestures in recent years by successive governments to convey to the world that Pakistan is trying to make itself safe for all religious and national minorities, like the Sindhis, like the Baloch, like the Pashtun. But the situation on the ground has only become worse. The fact remains that Pakistan receives constant criticism from within Pakistan by Pakistanis who we are hearing here today, but also international criticism for its draconian blasphemy laws from international human rights organizations. Since 2002, the US Commission on International Religious Freedom has recommended that Pakistan be designated as a country of particular concern for violations of religious freedom every year since 2018. In Sindh, my birth province, the tolerant land of Sufi saints, the state oppresses nationalists as well as religious minorities. The forced conversions, primarily of young Hindu girls, has become a major crisis. In its efforts to appease religious bigots, the state seldom acts to protect these young victims. According to the 2018, 2019, and 2020 annual reports by the Human Rights Commission of Pakistan, annually there are on average 1,000 cases of forced conversions of minority, primarily Hindu girls of Sindh, to Islam. The areas with the highest frequencies of such cases were Sanghar, Sakhar, Khairpur, Umarkot, Tharpakar, Mirpur Khas, Badin, Karachi, Tando Alayar, Kashmir, and Ghotki. According to a report in Dawn earlier this year, around 20 Hindu girls are kidnapped, forcibly converted, and married off every month. Many of these girls are underage. These forced conversions violate sections 3 and 4 of the Sindh Child Marriages Restraint Act 2013, which sets
13 years of age as the minimum marriage age. Courts tend to support the perpetrators of forced conversion to Islam, claiming that the young poor Hindu girls marry much older Muslim men and become Muslims of their own volition. The United States government's country report on human rights practices for 2019 and 2020 spoke of women in Sindh being victims of various types of societal violence and abuse, including so-called honor killings, forced marriages, and forced conversions, imposing isolation and being used as chattel to settle tribal disputes. According to the AJS legal cell, the laws enacted in Pakistan pertaining to rights of religious minorities have gone from being neutral to being discriminatory. Women belonging to religious minorities suffer most of this discrimination. It is strange indeed that only young, mostly underage Hindu girls seek to marry older Muslim men and want to change their religion to do so. That underage girls from religious minority communities seek to convert to Islam and marry men much older than them should make us worry both about the vulnerability of this segment of the population and the rationale behind these forced conversions. The 2017 Hindu Marriage Act allows for the termination of the marriage upon the conversion of one party to a religion other than Hinduism. Activists, however, claim that this provision weakens the ability of the government to protect against forced marriage and conversion. Twice, once in 2016 and once in 2019, the government of Sindh tried to outlaw forced conversions to Islam and forced marriages, and also to pass a Protection of Minorities Bill. The bill was passed unanimously by the Sindh Assembly in 2016, but under pressure from religious parties who threatened street protests, the governor, an appointee of the federal government in Islamabad, refused to sign the bill into law. In 2019, we saw a very similar action. I will just end here by saying the dehumanization of Sindh's and Pakistan's religious minority communities, coupled with these very scary times we are living in, a weak economy, and now this pandemic of the coronavirus, may result in cases of members of minority communities converting to Islam to stave off violence or hunger or just to live to see another day. So, to end all this, I just want to say, to give an example of the times we are living in and the government we have today, in October of 2020, a delegation comprising members of the Parliamentary Committee on Forced Conversions visited Sindh and met with representatives of minority communities. A member of the ruling coalition, who is also head of the Parliamentary Committee on Forced Religious Conversions, Senator Anwarul Haq Kakar, asserted at a subsequent press conference that most cases of forced conversion have some degree of willingness on the part of the girl. These girls are 12, 13, 14, 15, 16, 17 years old. This shows the will of this government and the increasing capitulation to extremism in our government, in our political parties, and in our society. So at the end, all I have to say is Sindh, as we all know, has such a long history of religious tolerance and pluralism. Let me end my comments here with hoping that all of us can reiterate that history and restore the land of Bhitai to its culture and historic traditions. Thank you. Thank you, Adi. Before you go, I have to ask one quick question. That you highlighted this, so it is a two-part question. The first is, even though now we have Child Protection Act, but we have seen uneven
implementation of it. For example, in one case, if I remember correctly, in Kandakot or Kashmir, the judge decided that she is minor and she actually punished the person who was involved in nikah. But in other cases, they just dance around ages, ask doctors to determine their age and stuff like that. This is number one, first part. The other part I have is, as a diaspora organization, what should we do to put pressure to end this cruelty? Adi? एक सवाल मेरा भी है, जी जी अगर इजाजत दें आप। जी 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 करें प्लीज। वो सवाल ये है कि हमेशा गैर मुस्लिम लड़कियां क्यों मुसलमान होती हैं, लड़के गैर मुस्लिम मुसलमान होके मुसलमान लड़कियों से क्यों शादी नहीं करते, और वो फहरिस्त किसके पास है वॉलंटियर्स की जो उसी वक्त मिल जाते हैं हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए जब वो मुसलमान होती हैं? ये इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला, मैं कई साल से पूछ रहा हूँ। थैंक यू जी अदी। मेरे ख्याल में देखिए ये जो आप कह रहे हैं अनइक्वल, ये कश्मीर में इंसिडेंट जो हुई थी उसमें द जज वाज फेयर। दूसरे incidents में you don't get this type of treatment, and the reason really is they are good human beings in Pakistan, in Sindh. And once in a while, you see the courage of that judge, you see the courage of the lawyer who picks up a blasphemy case. You see all of that, even today, in spite of everything. So, ye disparities to honge. But on your larger question of what can the World Sindhi Congress do as a diaspora organization, we have to do, all of us, do what we have been doing, but do it at higher levels. All these reports that I am quoting figures from the Human Rights Commission of Pakistan to United States Commission on International Religious Freedom to the EU, why are they now coming up with these good reports? It's because all of us gathered here today have done the work. It is our duty to speak for the voiceless and to speak for those who are victimized in these ways. And all we have to do now is work harder. Ada, we just have to work harder. There is no time. Or Mehdi Hassan Saab ne jo pucha tha, this is a fact. Frankly, these are not even forced conversions or forced marriages. Frankly, these are cases of sexual assault, rape, slavery. There is no question that a little girl child of 12 or 13 or 14 is going to go to Mia Mithu's, who I know, I served in parliament with him, to his mosque, his dirty, filthy, we know these people. I have sat next to them. I have worked with them. These people have no aspirations for converting people or bringing people to Islam from any higher purpose than money and power and filth. So this is all I have to say. We have to fight harder. मेरी भी यहाँ पे एक बात है कि ये इनको अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलने दिया जाता, यानी जुडिशरी किस टाइप का रोल अदा करती है कि वो 22 जजेस जो हैं वो उनको अपने इस्लामिक पस मंजर से या मेल शाविनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं मिलने देते। नहीं, और आई थिंक यहाँ पे ये सवाल उठती है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इन बच्चियों को जजेस ये कहते हैं कि वंस दे हैव बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम, इवन अनविलिंगली, जब जज भी कहते हैं, जज साहिबान की दे हैव बीन अनविलिंगली कन्वर्टेड टू इस्लाम, फिर भी दे कैन नॉट गो बैक टू देयर ओन फेथ एंड टू देयर ओन फैमिलीज. This is jahalat. Yeah. This is inhumanity.
हम कहाँ फिर पहुंचे? उनका पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ है। यानी जब देखिए, यहाँ फैसले हुकूमत नहीं करती, यहाँ फैसले रिलीजियस माइट करती है। जी 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 जो बिल्कुल माइनॉरिटी में है लेकिन पावरफुल है, उसको जी। कोई वायलेट नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। मेहदी हसन साहब, मैं एक चीज आपसे पूछ लूं कि आप अब माइनॉरिटी क्यों कहते हैं? हमने बचपन से ये देखा है कि पाकिस्तान में अब लोग more and more extremist thought के नहीं, मैं माइनॉरिटी इसलिए कहता हूँ, आपकी कथा कलामी हो रही है जी कि मजहब के नाम पे 9 इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं अब तक। जी मजहब जी के नाम पे इलेक्शन लड़ने वालों ने कभी डबल फिगर में निशस्तें हासिल नहीं की, जी बिल्कुल इसलिए वो माइनॉरिटी में है। नहीं बिल्कुल जी, I take your point sir, I stand corrected. Yeah. जी Thank you, Adifara. I know you have family emergency. Please take care of yourself, and thank you. Appreciate. Uh, I'm going to. We still have two speakers, Sai Taj Joyo and Sai our own Sai Lakku Lohano. So I'm going to request Sai Taj Joyo. So let me introduce him. He's a researcher, writer, teacher, renowned literacy figure also, and veteran political leader of Sindh rights movement. Sai Taj has written more than 50 books on various aspects of Sindhi literatures, such as classical and modern Sindhi poetry, Sindhi literature figure, and Sindhi history. Saint Taj also edited and published 6 books of Saint James Sayed. He was Secretary General of Sindhi Adbi Sangat. Right now, he is part of the struggle going on for the enforced disappearances. He's forefront of it. Recently, Pakistan government allotted him the presidential award, which he gladly rejected it because he believed that until every political worker is out of these illegal detention and Sindh will get right, he cannot accept this award. And we really appreciate his struggle and for his gesture. He suffered personally also. His son was abducted to pressurize him to get out of this protest, which he never did. Saint Taj Joyo, महिरबानी तव्हां ॻाल्हायो भले। तव्हांखे अनम्यूट करणो पवंदो साईं। ठीक है सर। हाँ साईं। हाँ देख सगने सच जकड़ियल मुंहिंजे जीअ खे ॻिची थिए गच तब चवां जो चवणो हुजे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जा दोस्त इंसानी जे आलमी ॾींहं ते ही जेको वेबनाशिया कंदुसि पाकिस्तान ठहण ऐं पाकिस्तान ठहण खां अॻे जेके भनकड़ियूं थियूं आहिनि 40 जे करारदाद ते पाकिस्तान ठहणो हो ऐं पहिरीं पहिरीं जेका भनकड़ी थी 40 जे करारदाद जे ख़िलाफ़ पाकिस्तान वजूद में आयो ऐं 11 सितंबर 48 ते जेका जिन्ना साहब तकरीर कई जंहिंमें हुन तमामु बुनियादी ॻाल्हियूं कयूं अॻिते हली उन्हनि जो बि इनराफ़ कयो हुयो। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त 52 में साईं जीएम सैयद खान अब्दुल गफ्फार खान शेख अब्दुल मजीद सिंधी हुकूमतन के पंहिंजूं ख़िदमतूं ऑफर कयूं पर हुननि खे मुल्क दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन इस्लाम दुश्मन सॾियो वियो। वञूं सिंध जे वजूद खे ख़तम कयो वियो। सिंधी ॿोली कोई न कई वई। तव्हां सभु सम्झो त 73 ॿियो त छॾियो पर 3 दर्जे जो बि शहरी तस्वुर न कयो वियो। सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ा कया विया ऐं सिंध खे मुकमिल कानूनी बनायो वियो ऐं ख़ासि करे ही जेको मिसिंग पर्सन जो मामलो आहे उहो अॼु जो न आहे। ऐं सभ खां पहिरियों मिसिंग पर्सन हसन नासिर खे सॾींदुसि ऐं उन खां पोइ 80 वारे ॾहाके में जेके माण्हू खया विया
उनमें शहीद सिकंदर मंगसी जो अॼु ॾींहं ते लाश न मिलियो। नज़ीर अब्बासी जी जेका तव्हांखे ख़बर आहे उनजी शहादत कीअं तमामु घणा माण्हू जेलनि में आहे, पर उन वक़्त में जेके माण्हू खजंदा हुआ ख़बर हूंदी त कहिड़ो सूबेदार खणी वियो, कहिड़े एजेंसियुनि वटि असीं रहियासीं, कहिड़नि जजनि सज़ाऊं ॾिनियूं, पर ही जेको मुशरफ दौर खां वठी जेको माण्हुनि खे खणण जो सिलसिलो शुरू थियो आहे, ऐं ख़ासि करे गुज़िरियल 5 सालनि खां ख़ासि करे गुज़िरियल 5 सालनि खां उन में जेका शिद्दत आई आहे, उहो न इंसानी, न अख़लाक़ी, न आलमी कानून, न मुल्की पाकिस्तानी आइन ऐं कानून खां ही सभु मथां क़दम आहिनि। जेके माण्हू था वञनि, हेलो हेलो ॻाल्हायो। हेलो जी जी जी, आवाज़ हेलो हेलो, आवाज़ अचे थो? जी जी जी। हा, त ही जेको माण्हुनि खे खयो थो वञे ऐं राति जो बूथ ॿधी मुख़्तलिफ़ एजेंसियुनि जा माण्हू ॾाकणूं रखी घर टपी ऐं माण्हुनि ते तशदुद करे हिकिड़े माण्हूअ खे खणण लाइ 15-20 गाॾियूं अचनि थियूं, जंहिंमें 40-50 माण्हू अचनि था, ऐं उहे माण्हू वरी 16 सालनि जो ॿार, 18 सालनि जो ॿार, 21 सालनि जो नौजवान, को शागिर्द, को पोरियत, को मास्तर, को उस्ताद, को क़ौमी वर्कर, को कंहिं पार्टीअ जो वर्कर, उहे खयां था वञनि। ऐं सबबु कहिड़ो आहे? ऐं यूसुफ मस्ती खान सां मुंहिंजो पुटु सारंग ऐं असीं गॾिजी वञी मिलियासीं, जेको हुन इस्लामाबाद में ज़बरदस्त तकरीर कई, हुनखे हार विधासीं। उन सां जॾहिं ॻाल्हियूं थियूं त उन ॿुधायो त 1971 में खॼियो वियोसि, ऐं मूंखां उहे सुवाल कया विया आहिनि जेके सारंग खां सुवाल कया। मूं चयोमांसि 81 में आऊं वियुसि, मूंखां पुछियो वियो तूं भारत केतिरा वियो, अफ़गानिस्तान केतिरा विया, हथियार किथां था मिलनि, पैसा किथां था मिलनि, जीएम सर खे पैसा किथां था मिलनि, ऐं अॼु जेके नौजवान खजनि था उन्हनि खां बि उहे साॻा सुवाल थियनि था जेके 71 में, जेके 81 में। माना हुननि जो माइंड सेट अॼु ॾींहं ते तब्दील न थियो आहे। 16 सालनि जो जेको आहे बशीर अहमद, 21 सालनि जो आकिब चांडियो बि दहशतगर्द आहे, 18 सालनि जो गुलाम रसूल शर बि दहशतगर्द आहे, सुहेल रज़ा भट्टी जेको 15 में 2015 में खॼो थो वञे, प्रिंसिपाल जे ऑफिस मां हू शागिर्दनि खे घुराए थो मसइलनि त उतां खॼी थो वञे, उहो बि दहशतगर्द आहे। अयूब कांदड़ो जेको पंहिंजे नौकरीअ ते पब्लिक हेल्थ सर्विस जी नौकरीअ ते वञे थो, उहो खॼी थो वञे, उहो बि दहशतगर्द आहे। शादी खान सूमरो, साईं हिदायत लोहार जेके आज़ाद थी आया आहिनि, मोहब लिगारी जेको वकील आहे, उहो सारंग, सभु जेके आहिनि असीं सिंधी दहशतगर्द आहियूं, छाकाणि त असां सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾोह कयो आहे। उहो ॾोह इहो आहे, चऊं था त सिंध असांजी आहे, सिंध जा वसीला असांजा आहिनि। जंहिं बि माण्हू इहा ॻाल्हि कई आहे उहो ॾोहारी आहे। हिन वक़्त ताईं 7 जे तइदाद में माण्हू खणिया विया आहिनि, ऐं वॾी सूरत जी ॻाल्हि इन सां इतफ़ाक़ करियां थो त असां वटि हिन वक़्तु 60 माण्हुनि जी लिस्ट आहे, पर तमामु घणा माण्हू आहिनि जेके असांजे हिन जिदोजहद दौरान ज़ाहिर थिया आहिनि। मसलन गुलाम शबीर कमराणी 2002 में खॼियो वियो आहे, जॾहिं असां गुज़िरियल साल ससुई जी पोथी फाड़ी वई हुई, ऐं जंहिंखां पोइ हिन जिदोजहद ज़ोर वरितो। असीं जॾहिं सरहद जेको सिंध जो इलाइक़ो आहे उते वियासीं त उनजी नंढड़ी भेण आई त चई मुंहिंजो भाउ जेको आहे सो 2010 खां खयो वियो आहे। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो, ईअं जॾहिं मूंखे सेनेट में घुरायो वियो सारंग जे मसइले ते, ऐं उतां मोटी आयो आहियां त हिकिड़ो फ़हीम हैदर, फ़हीम रज़ा सूमरो, उनजो वालिद फोन करे थो त मुंहिंजो पुटु 2013 में खॼी वियो आहे। अब्दुर्रहमान पहोड़ जेको JU आहे जो आहे, उहो चए थो त मुंहिंजो पुटु जेको आहे 2014 में खॼी वियो आहे।
ऐं ताज़ो मां इंक्वायरी कमीशन में शाहिद जूने जी घर जी विस्त उते हिकिड़ो मौलवी मिलियो शिकारपुर जो चई त मुंहिंजो पुट जेको आहे 2014 में खजी वियो आहे। यानी माण्हू ज़ाहिर करण लाइ तयारु कोन्हनि, उन्हनि जे घरनि ते वञी दबाव विधो थो वञे। इहो जेको सिस्टम आहे, असीं चऊं था त इहो न इंसानी आहे, न अख़लाक़ी आहे, न पाकिस्तान जे आइन मूजिबि आहे, न ई अक़वाम मुत्तहिदा जे चार्टर मूजिबि आहे। भाई जेके जंगी कैदी थींदा आहिनि उन्हनि जा बि कानून थींदा आहिनि, पर हिते त उहे बि कानून लागू कोन था थियनि। कलभूषण यादव जंहिंखे भारत जो चवनि था त उहो उन पाकिस्तान में तमामु घणियूं कारवायूं कयूं आहिनि, उन सां बि भेण माउ मिली सघे थी, उनखे बि काउंसलर रसाई ॾिनी थी वञे, उनखे बि वकील करण जो हक़ ॾिनो थो वञे। त हीअ असांजा बचड़ा, हीअ असांजा नौजवान, हीअ असांजा सियासी समाजी कारकुन, ही पोरियत छा उन खां बि वॾा ॾोही आहिनि? असीं सुवाल था करियूं आलमी हक़नि जे तंज़ीमुनि खां, असां सां हिन जिदोजहद में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराबरि जी शरीक आहे, ऐं जेके सियासी धुरियूं असां सां हिन में साथ ॾियनि थियूं, असीं उन्हनि जा तुराइता आहियूं। जेके ॿाहिरि वेठल वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जहिड़ियूं जमायतूं आहिनि, असां उन्हनि जा तुराइता आहियूं। असीं चऊं था त हिन जिदो असांजे माण्हुनि खे आज़ादु, हाणे जेके निकिरी था अचनि उन्हनि जी हालत तव्हां ससुईअ खां बि ॿुधी, पर आउं तव्हांखे ॿुधायां त मुख्तियार आलमाणीअ जे स्पाइनल कार्ड में इंजेक्शन हई वई आहे, जेको हलंदे हलंदे किरी थो पए। शादी खान सूमरो 48 सालनि जो आहे, पर तव्हां हुन सां मिलंदो त 65 सालनि जो तव्हांखे पोड़ो मिलंदो। त जेके माण्हू मोटी अचनि था, उहे फिज़िकली, मेंटली, जिस्मानी तरह उहे एबनॉर्मल था वञनि या मज़ूर थी था वञनि। तंहिंखां पोइ हाणे हिन छा कयो आहे, जो 12, 16, 17, 18 साल जा ॿार खणी सम्झनि था। तव्हांजे मुंहुं ताज़ो हिकिड़े अमलदार सां ॻाल्हायो, जेको सरकारी अमलदार हो, ऐं उन ॻाल्हि जी रिहाइश ॾेखारी, ऐं उन सां मूं जॾहिं ॻाल्हायो त मूं उनखे चयो त 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सेप्टेम्बर, इहे 3 ॾींहं पाकिस्तान जा वॾा ॾींहं आहिनि, ऐं उन्हनि 3 ॾींहंनि ते माण्हुनि खां अॻु माण्हुनि खे खणो था, ऐं पोइ माण्हुनि खां तक़ाज़ा कयो था त पाकिस्तान सां मोहबत कयो। तव्हां ॿुधायो त पाकिस्तान सां मोहबत था पैदा कयो या नफ़रत था पैदा करियो? हिकिड़ो फर्द जेको खजी वियो, ऐं उन जूं जेके फैमिलीअ जा 10 फर्द, 8 फर्द, 5 फर्द, उहे बि तव्हांजा मुखालिफ़ थी विया। त हीअ जेके खणनि था, उहे ख़ुदि पाकिस्तान जा दुश्मन, पाकिस्तान लाइ, मुल्क लाइ नफ़रत पैदा था कनि। तमाम माण्हुनि खे बुनियादी हक़ त कोन था ॾियो, पर जेको बुनियादी हक़ घुरे थो उनखे खणी था वञो। इहो किथां जो इंसाफ़ आहे? तव्हां पार्टियुनि ते पाबंदी था विझो। जीअं सिंध क़ौमी महाज ते तव्हां पार्टी विधी आहे, अब्दुल वाहिद आरिसर, सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त हू पुरअमन अदम तशद्दुद जी सियासत कंदड़ हो, उनजी पार्टीअ ते पाबंदी विझो था। इहा कहिड़ी दहशतगर्द पार्टी आहे? छोकिरा खजी था वञनि, उनखे चवनि था तव्हांजी फलाणी तंज़ीम सां मसइलो आहे। भाई जो न सरबराह ॾिठो आहे, न उन तंज़ीम बाबति हुननि खे का, बसि हुननि कोर्ट में पेश थिया, उते तव्हां कोर्ट में साबित करे न, तव्हां इन करे खणो था, तव्हां इन करे कोर्टुनि में पेश नथा करियो छाकाणि त तव्हां वटि को बि सबूत न आहे। तव्हां सिंध जे माण्हुनि, तव्हां सिंध जे बेटनि ते वालार कयो आहे, सिंध जे कोयले ते कब्ज़ो आहे, हाणे इन खिलाफ़ सीपेक जो मनसूबो आहे, हाणे इन्हनि ते मथां को आवाज़ उथारे, उन करे तव्हां नौजवाननि खे खणो था। तव्हां सम्झो था त माण्हू, पर ही तव्हां पंहिंजे खिलाफ़ पाण बग़ावत पैदा करियो, पाण मुल्क जे खिलाफ़ नफ़रत करियो। अहिड़ी हालत में को मुल्क सां, ऐं वरी जेके क़ौमी झंडो खणी को में शामिल थियो त ॿिए महीने चए आवाज़ उथारण बि ॾोह, इहो किथां जो इंसाफ़ आहे? असीं चऊं था त पाकिस्तान जूं कोर्टूं आहिनि, पाकिस्तान जो आइन आहे, जेको माण्हू खजे थो पाकिस्तान जे आइन मूजिबि 24 कलाकनि अंदरि उनखे ज़ाहिर करियो। उन ते को इल्ज़ाम आहे त उहो इल्ज़ाम हणी कोर्टुनि में आणियो। हीअ असांजो ॿारड़ा सुरड़ तव्हां सां ॻाल्हि कई, बशीर अहमद शर
ऐं उन सां गॾु जेके चार आहिनि हिकिड़ो ॿिनि जी त असांखे का ख़बर न आहे पर ॿ माण्हू उन्हनि जे बारे में असांखे सभु कुझु ख़बर आहे उते तंज़ीम सां वाबस्तु न आहिनि ऐं उन्हनि ते तव्हां केस उहे हो जेके या त क़ैद में आहिनि उन खां पोइ अमल में था अचनि या उन ॾींहुं केस मड़े था हणो जंहिं ॾींहुं तव्हां उन्हनि खे आज़ादु था कयो उन ॾींहुं केस था मड़ियो ही किथां जी शराफ़त आहे ही किथां जो कानून आहे ही किथां जो इंसाफ़ आहे असीं आलमी अदालत खे ऐं सॼी दुनिया में जेके बि इंसानी हक़नि लाइ तंज़ीमूं कमु कनि थियूं उन्हनि खे चऊं था त मिसिंग पर्सन सिंध जो वॾे में वॾो हिन वक़्तु मसइलो आहे इंसानी हक़नि जो बाक़ी त असां समूरनि इंसानी हक़नि खां महरूम आहियूं असांजे बेटनि ते कब्ज़ो थिए थो कराचीअ में असांजे नौकरियुनि ते कब्ज़ो आहे असांजे कारखाननि ते कब्ज़ो आहे असांजे तेल ते गैस ते कोयले ते असांजी मैदनियात ते कब्ज़ो आहे असांजे वसीलनि ते कब्ज़ो आहे असांजी ॿोली खे जेको आहे क़ौमी हक़ नथो ॾिनो वञे इहे सभु कुझु पंहिंजी जॻह ते पर ही वॾो मसइलो आहे उन मंगेंदे खे 3 महीना उनखे पाण खे कैद में रखियो वियो उन जो मंगेंदो थी चुको आहे ब्लड प्रेशर ऐं जेको आहे शुगर जी मरीज़ थी वई आहे ऐं असांजो मुर्तज़ा जुणे जी अंबड़ 85 सालनि जी आहे ऐं उनजो पुटु ज़रई फार्म डोकरीअ ते हारी हो उहो खजी वियो आहे उहो कहिड़ो दहशतगर्द आहे उन्हनि खे आज़ादु करियो रियाज़ कासकेली इम्तियाज़ कासकेली महराण मीराणी के शागिर्द आहिनि को खीर जो वाड़ो थो हलाए उन्हनि खे खणी था वञो छा माण्हुनि खे पंहिंजी नौकरी करण जो हक़ कोन्हे तव्हां पढ़ण जो हक़ नथा ॾियो न नौकरी करण जो ऐं दर्ज़ी शीराज़ सूमरो ऐं फराज़ सूमरो ॿई दर्ज़ी आहिनि लाड़काणे में अची दर्ज़ को कमु कनि था उन कोन बहरहाल असीं चऊं था त पाकिस्तान हुकूमत ते दबाव विधो वञे त जीअं के मिसिंग पर्सन सिंध में आहिनि बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा पंहिंजे पंजाब में बि हुजनि असीं उन्हनि सभिनी जे लाइ आवाज़ उथारियूं था ऐं असां तव्हांखे सलाम पेश करियूं था जो इंसानी हक़नि जे ॾींहं ते ही तव्हां वेबिनार कोठायो आहे जिन बि शिरकत कई आहे जिन बि ॻाल्हायो आहे उन्हनि बिल्कुलु सही ॻाल्हायो आहे उन्हनि बिल्कुलु हक़ सिंधी जो मसइला आहिनि सिंधी हिंदू अक़लियत न आहिनि सिंधी क़ौम जो हिस्सा थी में दिल्लीअ में हिकु सेमिनार में वियोसि उते पाकिस्तान जो 3rd सेक्रेटरी सिंधी हो उन मूंखे मां उन सां मुलाक़ात कई कंहिं दोस्त जे मार्फत उन मूंखे चयो ख़ुदारा तव्हां सिंध मां हिंदुनि जी लॾ पलाण खे रोकियो ही पाकिस्तानी एजेंसियूं लॾ पलाइण पियूं कराइनि त माण्हुनि खे तव्हां जेको मुस्लमान बनाइण जो मियां मिठू वेठो आहे ठेकेदार तव्हांजो उनखे त गिरफ़्तारी कोन था कयूं ऐं बिल्कुलु ही असांजे बुज़ुर्ग जेको ॻाल्हायो त सिर्फ़ु सिंधी औरतूं हिंदू औरतूं नाबालिग औरतूं छो थियूं मुस्लमान थियनि ही प्लानिंग आहे हिकिड़ी सिंध जे हिंदुनि खे जेके सिंधी क़ौम जो अटूट हिसो आहिनि उन्हनि खे वरी ॿिए विरहाङे ॾांहुं धिकण असीं उनजी मज़म्मत करियूं था ऐं तमामु मां रखूं था त सिंध सां थियल ॾाढनि बाबति आवाज़ उथारींदो महिरबानी Thank you, Sai. Tajosa. So I'm going to now invite our final speaker, my friend, my mentor, leader, Sai Lakhu Luhanu. He is currently General Secretary of World Sindhi Congress, former chairman of it. He's working for World Sindhi Congress for more than 3 decades. And his consistency speaks volume with how much he cares about Sindhi rights and all the rights which we have discussed earlier. So after this, Lakhu, we have some question and answer session, so please stick around. So I'm going to request Sai Lakhu Lohano to please speak. Very mehrbaani. First and foremost, it has been a wonderful experience for me to listen to the
one of the pioneer human rights defenders and human rights practitioners from Sindh and Pakistan. Although I know that all know about the Universal Charter of Human Rights, I would like to quickly recap it. And it was a 10th of December, 1948, when at that time, there were only 40 out of 48 countries. And this was in the background, in the backdrop, because Second World War has ended, and Second World War saw one of the most destructive wars in human history. 60 million people were killed, and millions were displaced, and the whole cities disappeared from the planet of Earth. Then number of statesmen and politicians and academics and analysts and intellectuals, they said that this catastrophe should not happen in the world again. And with the work of years, they reached to this Universal Charter of Human Rights. Now, according to this Universal Charter of Human Rights, all human beings are equal in dignity and rights. The first para of the preamble of the charter says that without the human rights, there will be no freedom, there will be no justice, and if there is no justice, there will be no peace. And if there is no peace, the humanity cannot progress. And number one, I want to remind, in the Universal Charter of Human Rights is not only the human rights. Number one, these are universal. So they apply to everyone, no exception. And these are inalienable. The word used in the charter, the first line, these are the inalienable rights. So nothing can say that they do not apply and you are not qualified for. These are the universal rights and these are the inalienable rights, number one. Number two, there are not only rights, there are fundamental freedoms as well in the charter. And what are the fundamental freedom? Freedom to speak, freedom of religion and belief, freedom from fear, freedom from want, freedom from, and want means from poverty, from suffering, from humiliation, from hunger. And these say that until unless the human family, the humankind, they do not achieve the objectives, the humankind as a whole, they cannot progress. There will not be peace. In that space and time, there were 48 states, 58 were the members. Today, after 72 years, there are about close to 200 nations that have approved and adopted the charter. So it's about 400% increase the number of states. Basically, there are a number of states which are multinational. This is important. And the population of world has grown from 2.3 million to more than 7 million. So it has increased by 300 times. Now coming to the situation, human rights situation in Pakistan and Sindh. Because if you look at the Human Rights United Nations Charter, who are the signatory? There are the states, whether one nation states or multinational states. These are the states which are signatory to this charter. And therefore, the first point, it is their responsibility to protect and preserve the human rights. Therefore, to understand the current crisis of human rights in Pakistan and Sindh, it is really important to understand the nature of state of Pakistan, and then it is position within that state, the position of Sindh. From day one of Pakistan's formation, military was the most dominant. And there are some very important and very difficult questions to understand. We may go to the symptoms. We may discuss the forced enforced disappearances and the forced conversions and all that. But unless we do not understand the fundamental source that is causing this problem, and we do not address these fundamental issues, the issue will remain there. So let me go to the fundamentals. Let me go to the basics. Pakistan's state, from day one, the dominant force was army. Of course, they had partners in that, the civil bureaucracy and the feudals. But what we see
there is this journey of state of Pakistan. In that journey, the army has becoming, it is strengthening its control. And today, rather than going into the details, today we are, and of course we have seen that almost more than 30 years, it was direct army rule. Today, we are in a state of Pakistan where literally every sphere of life is controlled by no one else. And it is apparent. Anybody who has got wisdom, who's got understanding, who reads and studies, they know it is the army that runs literally every sphere of life. We see, I mean, say, for example, in our last webinar, there was saying Haris Khalik. He said Pakistan is a colonial state, where in that colonial state, the parliament of Pakistan is less powerful even during the British period. And that's true. We know what is the status of parliament. Look at the judiciary. So the army has literally controlled every sphere, be it parliament. They want to bring anyone. We have seen that how they have brought governments, how they have removed governments. We have seen that. Now it is becoming even more easier with the day. Not only that, read the books of Aisha Siddiqa. The largest corporate company of Pakistan is army, which runs from a bank and an airline to corner shops and even petrol stations and bakeries. So they're the largest. That's the situation. And then look at the judiciary, how judiciary is working under them. And media, they know that they have, this is only one country in the world who run their own, the army runs their public relations company, ISPR. So they have literally in that situation. Sindh, unfortunately, from day one was considered as a conquered territory. And the status of Sindh, it is really very, very, very important. Because if you look at the world studies, if you look at the countries and states, Sindh is a typical colony. And Sindh was considered as a conquered territory. Karachi was taken away. One unit was formulated. They fundamentally denied the thousands-year history. They say Sindhis nation. No, it is anyone who says Sindhis are a nation, they are traitors. And say Sai GM said, and for same reasons, Baloch national leaders and Basha Khan, they spent years in prisons because the fundamental, they denied the thousands years old historical societal phenomenon that Sindhis are a nation. Okay, fine. And even there was a time when you write Hyderabad Sindh or Larkanu Sindh, it was a punishable crime. So they denied basically. And fortunately or unfortunately, Sindh has got enormous resources. Sindh has got 72% of gas, 54% of oil, the only viable seaport, the largest coal deposits, worth $23 trillion, then agricultural lands, and the colonial occupation. We do not say, because in that setup, when military is dominating every sphere of life, inherently, these cannot sustain without committing human rights abuses and crimes. There's no other way that they can sustain their power that they have been doing. During the time of one unit, and over that period of time, at that point in time, there were 8 million acres of most fertile lands as a result of Ghulam Ahmad Bahraj. They were distributed among army and their people and all that. And that has continued. There is no other part in the world, I'm ready to give the statistics, the way the colonialism, the colonization and occupation of resources of Sindh has taken place. I mean, every now and then you will read 10,000 acres have been given to army, 15,000 acres of land has been given to army. The lands along Karachi and all that, we know that defense housing societies are every city. But in Karachi, the most valuable lands in Karachi, the 1/3 is owned by army.
the literally hundreds and thousands of acres of land is owned by army. In no other part of Pakistan this happens. Say, for example, now they want to take our entire coastal area. They are occupying our islands. I mean, look at these. They stopped our waters. They created these dams. No consultation against the international law. Again, even they don't care about even the laws that they pass. And they made these dams. They don't care as human beings. The result, say, for example, the water down Kotri barrage has decreased by 90%. Millions of people have suffered. Hundreds of thousands of acres have disappeared under the ecological system that was established millions of years, that has gone. Now they want to lease one of the miracles of nature, Karunjar mountain. The age of Karunjar mountain is over 1 billion years. Nothing, if you combine the whole the whole wealth of the world, if we destroy the Karunjar, nothing can recreate Karunjar. As nothing can create the ecological system that they've destroyed. In the delta of Sindh, nothing can recreate Karunjar. And whom they have given this lease? To FWO, Frontier Works Organization, an Army's engineering wing. Say, for example, now they have reached to the level, say, for example, that World Bank announces, say, for example, the expansion of Karachi is irregular, unchecked. That is another issue. We'll come to that. There is a huge issue. If you build your houses, you occupy every space, every inch of the land, there will be problems on the infrastructure and amenities. So we want to give you money to clear these sewage system. The army comes, that the best people that can do are the army people. So they are literally occupying this entire land. See, for example, all the lands in Karachi, in Thatta, in all these coastal areas, and Dadu and all that, Jamshoro, they are being occupied by, and we are being displaced. Now, this is the law in the world that these occupiers, they cannot establish their government without some local support. So what they are doing, they give power, because nobody, the source of power in Pakistan, we should say things very, very clearly. It is army and no one else. So they should give this power to one of the most decaying feudal classes in Sindh. And they, to be in power, to protect their operation and privileges, and they accept any condition. And then there is a sword on their head that if they do not agree with the designs of the military, they will be removed. And they have done that. And you read the papers that if you don't do that, so number one, they handed over the power to their collaborator feudal lords in one form, because if the one goes, the other will be ready. And those are the people who are stopping the societal development in Sindh. So they are put hands. The other thing, all the colonial occupation, they thrive on division. And what they have done, see, they have been working, we know. They find collaborators everywhere. They are dividing, they are creating rifts, they are trying to create the conflicts among the Sindhi and Urdu speaking people of Sindh, rather than going to them. And as a result of this occupation, as a result of this colonial occupation, the impacts, of course, there are these impacts. Those who raise the voice, they are gone. They are oppressing the Sindhi Hindus because they want to go so that Sindhis could be converted into minority. But the most important question for all of us is that in this situation, and then also what should be done? Because these are the identification of the issues. The Universal Charter of Human Rights, while mentions that every human being has a right to live as a human being, as a result of this occupation and strengthening the decaying feudal lords and creating this social rifts,
the price that the people of Sindh have paid, because the fund, if we narrow the charter into one line, the universal charter, the one line is that every human being has a right to live as a human being. And what is happening in Sindh? Honestly, when you read the statistics, they appear fake. These are in front of me. Let's say, for example, the multi-dimensional poverty in Tharparkar, where there are coal deposits worth $23 trillion, the multi-dimensional poverty is 84%. In Tata, in entire Sindh, more than 75% people, they are affected. They suffer from the multi-dimensional poverty. I mean, say for example, in Thar, where there is this 23 billion worth coal deposits, every day on average, can you believe that? It appears to be fake. Every day, at least 10 children die from malnutrition. There are studies and research that lactating mothers who breastfeed the children, 50% mothers don't have milk to breastfeed their children. This is the situation. Say, for example, 50% of the children, of the infants, they are stunned, means their growth is less than 50% what should be. For example, 40%, while these in the oil fields of Qadirpur and Badin and all that, 70% of the people, they are employed, they are not from Sindh. 40% of Sindhi youth, they suffer unemployment. The largest suicidal rate in Pakistan is in Sindh. I tell you one thing, I've got this report that the largest number of children out of school, because there are 8 regions. So start from Islamabad and then goes Pakhtunkhwa, Punjab, Balochistan and Fata. Sindh is the last. And according to Pakistan, 29%, according to them, 29% of children under 10, they are out of schools. We say 40%, but anyway, Chief Minister Murad Shah say 40%, they say 29%. So Sindh is in the bottom of that. 75%, this is the latest, 75 to 80%, 85% people in Sindh, they don't have basically drinkable water, the contaminated water, the right contaminated water. So there is an enormous pain. Do you think these people, the 80% of people suffer multidimensional poverty? Those mothers who cannot breastfeed their children, those young people and there are, say for example, they issue thousands of old domiciles. They try to put all these people to convert Sindhis into minority. They live as humans. There is the condition of 90% of Sindhi people currently in Pakistan, the colonial occupation, is reflected by one Urdu poem. For them, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं. This is the situation. In that situation, the question remains: what can we do? You people on the ground do a great work. The state is not responding. There's a principle following the Human Rights Charter, and that is again was accepted. That is called R2P, and that is responsibility to protect. Say, for example, if a state fails to protect its citizens, it is the responsibility of the international community. It is the responsibility of organizations who believe in human dignity, because human rights are human dignity, question of human dignity, human equality. And then the Human Rights Charter don't only talk about the individual rights, they talk about the societal collective rights. For example, in the charter, there is the right to nations to self-determination. That is also that nations have a right, because self-determine that how they want to live, how they want to run their political system. And without that, the nations cannot progress.
So it is really a very difficult and uphill task. But together, the people on the ground and the international community, and also the international community, the state, as not because of us, because there is a saying, the business has to be done like a business. They haven't run the state like a state. They have run it as their occupied territory. Therefore, there is no economic basis, there are no institutions, and now military is entering literally every sphere. If you look, all these government or semi-government institutions, they are headed by military. Now, slowly, they are going to the lower ranks. And even in the private companies, they are taking them because they believe that is the security. So they are weakening. You can see that is the reason they want to take even the last resource, the survival, the livelihood. Say these islands and this Karunjar has been livelihood for Sindhi people for thousands of years. They want to take this away. They're already taken our lands. So unless, honestly, even the people of Punjab, if they really they want to stop this affecting, of course, the human rights situation and its severity, it varies across one region to another region in Pakistan, but it is in long-term interest of the oppressed people of even Punjab to support the struggle of Sindhi people. They have been carried away. Their narrative that is being bombarded through all these media outlets and of the army, but there should be saner people, and they should try to make them to understand they have committed a mistake. I mean, the Bangladesh, I mean, nobody talks about much. I mean, 3 million people were butchered, 200,000 women were raped. Nobody, I mean, such one of the biggest catastrophe, and nobody dares to talk about it there. These are very hard questions, and they've created a mindset, particularly in the dominant nation, the Punjab, that we shouldn't talk, and they feel as if their privileges might be at risk, but it is the duty. If we really want to create a society, as the first line of the preamble said, that if there is no human rights, there will be no freedom, there will be no peace, there will be no justice, and there will not be progress. Let me work for it. It is the cause what to live for. It is the cause what to die for. Thank you very much. Sahi Mehrbani, Sahi Lakhu Sahab, always you speak so passionately. So what I'm going to do, I'm going to take few questions. Then I'm going to ask our chairperson, Dr. Rubina, to say thank. After her thank, then I will stay also to take more questions. If you please, all of you can stick around so we can have more questions. So I have one question before I ask Rubina to say thank you. So there are two biggest threats. Everyone, if you see, we have big list of the human rights violation, from forced conversion, enforced disappearances, land rights, and all these things. But there are two distinctive and biggest threat we feel that we have, and some of them are irreversible. The number one is the state is destroying the distinctive Sindhi Sufi culture of tolerance. So I would like to know what should we do, and can you highlight this thing on number one? Number two is the land rights. So we have seen people who always talk. We have example of Bahria town, where Supreme Court in his own judgment said that it is an illegal project, and they follow up, created an implementation code, and it's a mockery of justice system in Pakistan. That implementation code said, okay, give us this much of a sum, and this project is illegal. This project is legal now. So when you have these kind of a situation where state is against you, the highest court is doing this kind of a justice, and we don't expect anything from it. What is the options left for Sindhi nation? So I'm going to request first for Ayer Rahman, if you can talk about the cultural threat Sindhis are facing, and what should we do to protect the Sufi culture. Ayer Rahman, you have to unmute yourself. The Sindhi people
and along with them. अब मैं आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है. You see, Sindhi people have their complete right for the protection and promotion of their culture. You see, this is an inalienable right, and like all other communities in Pakistan, Pakistan is a multinational state. And the Sindhis have the same right as other nations have. See? And also, one should pay respect to the peculiar qualities of Sindhi culture. The culture of Sufi, the culture of servants, the culture of learning, and the culture of human dignity. There is no doubt about that. How it should be done? It should be done through people's unity, through people's own struggle. And when I say, when Pakistan should be accepted, the trouble starts with this. Pakistan should be accepted as a multinational state, multicultural state, or the constituents have their right to develop their culture, their languages, and their way of life. And the state has a duty to promote and protect them. That is the basic requirement. रियासत तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि रियासत का तो यही है ना, बहरिया टाउन का जो हमने बात की कि वो हाईएस्ट कोर्ट जब आपको इंसाफ नहीं देती तो क्या करें? देखिए, बहुत नाइंसाफी होती है, उसका नहीं हो, उसके खिलाफ जद्दोजहद करना फर्ज है आदमी का, और करते रहना चाहिए जब तक वो कामयाब हो. उसके अलावा तो और कोई मसला होने को है नहीं. जब तक कि लोगों का हक है कि अपने हकों को लड़ते रहें. बात ये कि बड़ा आसान है मेडिकल बात करना, बड़ा आसान है, लेकिन रेडिकल बात उस वक्त कहनी चाहिए जब रेडिकल बात सुनने को लोग तैयार हों. हालात जैसे भी हैं, बुनियादी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान को एक मल्टीनेशनल मल्टीकल्चरल स्टेट तस्लीम किया जाए. जबरदस्ती मार के लोगों को एक अकीदे में डालना जो है उनका ये गलत बात है. पाकिस्तान की तमाम कौमों को मैं उनको मल्टीनेशनल स्टेट जब कहता हूँ तो सब नेशंस को मानता हूँ मैं. सिंधी नेशन है, बलोच नेशन है, पख्तून नेशन है, पंजाबी नेशन है, इन सबको हक होना चाहिए. अब उसमें होता ये है कि जिनके पास इक़्तिदार होता है, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर होते हैं, वो अपने लोगों को तो बचा लेते हैं. और हमने इसी गलत पॉलिसी की वजह से हमने बंगाल खो दिए. बंगाल खोया नहीं, हमने बंगालियों को धक्के मार के पाकिस्तान से खारिज कर दिया. वही उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने मार के, और हम बिस्मिल्लाह कह गोली चलाते थे ना, तो उसमें होता था. अब देखना यही है कि रहमान साहब, जब आप कहते हैं मल्टीनेशनल स्टेज, तो मल्टीनेशनल स्टेज तो फर्स्ट स्टेज है. हम तो सिंधी, बलोच और दूसरी जो कौम वो ये कहती है कि हमें इक्वल स्टेट भी माना, नेशन भी माना, पंजाब की बालादस्ती नहीं हो. इस पे थोड़ा रोशनी डालें. देखिए ना, ये तो जबरदस्ती की बात है. मेरी नजर में क्या मायने रखती है? मेरी नजर में इस बड़े मुल्क में जो मुख्तलिफ कौमें रहती हैं वो सब बराबर हैं. नहीं, उन सब के खूब बराबर हैं, उन सब की तारीख जो है मोहतरम है, उन सब के कल्चर जो है एहतराम के काबिल है. और ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें कि अपने डेवलप करो. स्टेट का ये फर्ज है कि उनके कल्चर की हिफाजत करे, उनके सकाफत को प्रमोट करे,
उनको रहने का मजा इसलिए कि हर कौम अपनी जबान, अपने कल्चर, अपने रहन सहन, अपने ताल्लुकात उसकी बुनियाद पे अपने आगे बढ़ती है. कोई यूनिफॉर्मिटी का फार्मूला गलत बात है. सबको मार मार के एक जैसा बनाने की कोशिश जो बड़ी गलत बात है. दुनिया में मुख्तलिफ फूलों का जो दस्ता बनता है. आप ये कह के नहीं सब एक ही फूल होना, ये गलत बात है. सिंध भी एक खूबसूरत फूल है, बलूच भी एक खूबसूरत फूल है, पंजाबी भी खूबसूरत फूल है, पख्तून भी खूबसूरत फूल है. इन सबकी डाइवर्सिटी में जो इत्तेहाद होगा वो इत्तेहाद देरपा होगा. नहीं बशीर, आप इस पे रोशनी डालेंगे कि वो सिंध को जो माइनॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है, और ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं बहरिया टाउन वाले, आपने लैंड राइट्स पे भी काफी काम किया है, तो इस पे अगर आप क्विकली 1 मिनट के लिए बात करें. आप म्यूट है सर. लैंड राइट्स की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें किस मौजू पे करूं? कुछ मुझे आवाज आई नहीं प्रॉपरली. देखिए, जो हमें बड़ा थ्रेट है कि भाई सिंधी एज ए नेशन को माइनॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है. तो कोई राइट जो भी आता है वो पहुंच जाता है, वो आके मकान जमीन भी खरीद कर सकता है, कब्जे भी करता है, वोट भी हक है. दे हैव एवरी राइट एज सून दे लैंड. तो इसमें तो कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. ये सिंध गवर्नमेंट को हर सूरत में कि लैंड राइट्स के इसमें कौन किस तरीके से ले सकता है या किसका राइट है, और जो आबादियां यहाँ आ रही हैं और रोजगार के लिए आती हैं बाकायदा, उनको कोई रोक नहीं सकता, ज़ाहिरी बात है. और ना कोई हम मुखालिफत करेंगे उसकी, लेकिन उनके लिए कोई सिस्टम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा. मिसाल के तौर से ये कि कौन जो है वो सिंधी है, सिंध का रहने वाला है, या उर्दू और सिंधी बोलने वालों की बात नहीं है, लेकिन कौन सिंधी है. और जो दूसरे सूबों से आ रहे हैं, मतलब एक तो पहले डेफिनेशन ये करना पड़ेगी, और फिर जो दूसरे सूबों से आ रहे हैं उनको कितने अरसे के बाद ये राइट्स मिलना चाहिए. कोई एक चीज़ तो डेवलप हो. मतलब हम पूरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी भाई भाई, ये नहीं कह सकते, लेकिन जब आ रहे हैं लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम. लेकिन कोई सिस्टम हो, और वो सिस्टम इस तरीके से भी हो सकता है कि भैया तो आप फिर से ये डेवलप करें कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप की चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी है. जो आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और बहुत सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो उनके लिए भी कोई छोटे मोटे लाइसेंस जैसे पहले होते थे KMC के या KDA के, या सिंध के अंदर HDA वगैरह के, या वहाँ की म्यूनिसपैलिटीज़ के, वो सिस्टम जानबूझ के उखाड़े गए. और ये अयूब खान के ज़माने से है कि ये पूरे ये लाइसेंस वगैरह का या कुछ, यानी एक वो भी वक्त था कि ठेलों के ऊपर भी छोटी सी पट्टी लगी रहती थी, लोहे की पतरी थी, उसके ऊपर नंबर लिखा होता था रजिस्ट्रेशन का. तो जब तक कि कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं बनाएंगे ये बिल्कुल ख़त्म है. और ये बहुत सिस्टमेटिक है कि सिंध की जो अपनी शनाख्त है उसको ख़त्म किया जाए. यानी ये ऐसा नहीं है कि आबादी आने से ख़त्म हो रही है, बल्कि ये बाकायदा एक सिस्टमेटिक वे है कि बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए. और ये थ्रेट हमेशा रहेगी सेंटर को भी, एक तो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे ज़्यादा सिंध देता है, जैसे लखू साहब ने पूरी तफसील बताई आपको. दूसरा जो है, यानी एक तो ये है कि वो दे रहे हैं कि रिसोर्सेज में, और दूसरा ये कि इसकी अपनी एक डेमोक्रेटिक और जो सेकुलर कल्चर है ना, वो एक पूरे मुल्क के लिए थ्रेट है. जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कंसेप्ट है उसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है कि जितनी भी मूवमेंट चली, चाहे वो मशरक साबका मशरक पाकिस्तान के वक्त थी या जब भी, तो उनकी स्टार्ट या उनकी सपोर्ट जो है वो सिंध से बहुत स्ट्रांग होती थी.
और अब वो नहीं रही सिंध में, इसलिए कि आबादी का तवाज़ुन बदल गया है। तो मेरा ख्याल है कि कोई सिस्टम इनको डेवलप करना पड़ेगा जिसमें ये कि सिंधी कौन है, और जो दूसरे लोग दूसरे शहरों से हैं उनके अपने ठीक हैं, उनके वहाँ के शहरों के हैं, लेकिन यहाँ कितने अरसे तक काम करने के बाद वो यहाँ के राइट्स के या यहाँ के परमानेंट सिटीजन के हक रख सकते हैं। कि कुछ ऐसा रफ्सा खाका है, लेकिन ये बनाना पड़ेगा, वरना तो सिंधी सकाफत और सिंधी तहजीब जो है उसका कलाकामा हो जाएगा। जैसे हम ये देखते हैं कि सिंधी जो है एक बहुत तारीख पुरानी, हजारों साल की, लेकिन अब हमें बता दिया गया है कि सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई तारीख ही नहीं है। अब आप को देखें कि ये हमारे निसाब का भी हिस्सा है, और हम उसको यानी अपने इस्लाम का भी हिस्सा बना दिया और निसाब का भी हिस्सा। हम इससे आगे हमारे यहाँ का कोई बच्चा सोच नहीं सकता। तो डेवलप होने के बाद वो यही समझता है कि ये हमारी हिस्ट्री है। और अगर पहले तो सरसरियत तक हिस्ट्री थी, अब मोहम्मद बिन कासिम तक के खींच काट के लाएं, लेकिन पीछे नहीं जाने देते। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह से सिस्टम कुछ डेवलप करना पड़ेगा। ये रफ सा आइडिया। ठीक है, तो अब I think we're going to conclude this webinar, and I'm going to request Rubina. She's having problem. Can she join without video even? Can someone call her, please? चली गई। She was here. I think she got dropped. So there is issue with her internet. If she can join through voice. Okay. Saghir, do you mind if you conclude and say thank, please? Saghir is around? Just give me a minute. I think we are having some technical issues. Oh, Rubina is here. Rubina, please go ahead and conclude. Yeah. Sorry, I got disconnected. First of all, I would like to thank you, all our distinguished speakers, Ada Basi Naveed, Ada Dilshad Bhutto, Ada Aya Rahman, Ada Mehdi Hassan, Farhan Al-Zisfani, Taj Mohammad Joyo, Ada Lakhu, and actually our courageous young voice of missing person, Surat Lohar. It's a really honor to have you all today, and your hard work which you have put in today's session. As this is a virtual session, was organized in the background of International Day of Human Rights, a day on which around the world we reaffirm the importance of human rights in rebuilding the world we want, the need for global solidarity, as well as our interconnectedness and shared humanity. This interconnectedness is the key that we Sindhi diaspora strive for our sisters and Sindh brothers in our motherland Sindh on each day of our lives. We have continued to raise the voice against injustices against Sindhis at international platforms. We, WSC, since last 30 years, been raising voice at international platform, and this job has not been easy, despite we've been living in the free society, but the control and influence and hegemonic of state of Pakistan is creeping into UK, US, and other European countries, that we face challenges and harassments in these countries today as well, because we are Sindhis. A fundamental aspect we need to recognize that the state, which is supposed to be protecting our citizens and families and livelihood, has failed to protect own people. Today, many distinguished speakers talked about missing people, violence against women, children, and systematic marginalization of minorities.
These obvious crimes against Sindhis are unbearable. But what worries us now, that there are tacit aspects of human rights which needs to be talked about it. And these tacit violence are where this hegemonic state, Pakistan, systematically taking control of our livelihood through land grabbing, misappropriation of fresh water and natural resources. These are all right linked to the right to live. And this is what we Sindhis want, is a right to live on our own motherland. For us Sindhis, it's very clear that state has failed to protect our people, and all we see, the plans, actions, and strategies to marginalize us on our own motherland. Whether Pakistan become a democratic state or it's not, it's now irrelevant for us as Sindhis, because we have lost so much that we cannot afford further loss of our dignity, heritage, people, the culture, the language, and actually now the livelihood. We do not see a coexistence of Sindhis in Pakistan or with Pakistan. So it's all about the time for all oppressed people, nations within Pakistan needs to unite to resist the hegemonic state and let Sindhis and other oppressed nations and people to live their basic human rights, which is right to live and right to self-determination. And thank you, and GSM. Thank you again. Thank you, Rubina, for concluding. And now we're going to conclude. Really appreciate everyone who joined, all the panelists, and we hope we will do it again. So again, GSN and next year in Sindh. Thank you. Bye-bye.